हेलो हेलो. Check, hello, check. Yes, very good morning, my dear friends. Dosto, good morning. Wonderful. First of all, congratulations on completing your CA foundation, the first step of your journey. अभी आगे बहुत काम बाकी है, वो आपको भी पता है. सब आपको ये बोल रहे हैं कि आगे बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है. बट आई एम श्योर कि आपको कोई नहीं बोल रहा कि क्या काम बाकी है. बराबर सर? अग्री टू दैट पॉइंट? एग्जैक्टली. सो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे अपने को क्या काम बाकी है और क्या करना क्या है अपने को, एंड व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट, एंड व्हाट एम आई, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑल दैट आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ दिस क्लास. ठीक है दोस्तों? अरे बच्चों बोलो यार. Wonderful, very good. First of all, my dear friends, hearty welcome to Expert Academy. First of all, and this is CA Shiva Teja here, who is a qualified chartered accountant and cost accountant, who have trained close to more than about 20,000 students, approximately last more than 11 years. I qualified my CA way back in the year 2011, and yeah, I'm so happy to share with you guys that
I became CA and CMA both at the age of 21.5. So I feel very happy and proud about it, with blessings of my parents, faculties, support, everybody. Of course, not relatives, but बाकी सब लोगों का सपोर्ट की वजह से आज भी बन गए हम लोग. रिलेटिव्स भी एक रीजन से कारण है दोस्तों, बिकॉज रिलेटिव्स बोलते हैं ना कि आप कुछ कर नहीं सकते बेटा, आप कुछ कर नहीं सकते. वही मोटिवेशन है मेरे लिए. करेक्ट ना दोस्तों? रिलेटिव्स वो एक अलग तरीके का लोग है जो वेट करते हैं कि अपन पास ना हो जाए, और अपन उनको पास करके दिखाए तो जो खुशी मिलता है ना उनके चेहरे पे, जो अपने को खुशी होता है उसी से. करेक्ट सर? Right, wonderful. So guys, I'm here to teach a lovely, beautiful subject called CA Inter Taxation. And I'm sure you guys know very clearly that in this beautiful taxation subject, there are two components. क्या है दो component बेटा? Wonderful. पहले point है income tax. Other category is your GST. This income tax has got a weightage of about 60 marks. GST has got a weightage of about 40 marks. आपको लगता है 60 मार्क इंपॉर्टेंट है? आपको लगता है 40 मार्क इंपॉर्टेंट है? सर हम लोग सीए लोग हैं सर. अगर हम क्रिकेट खेलते तो 50-100 पे बैट नहीं उठाते, हम लोग 40 और 60 पे उठाते बैट. बिकॉज 40 का कीमत क्या हम जानते हैं और 60 का कीमत क्या हम जानते हैं. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? एंड लेट मी टेल यू गाइज, हैविंग कम अक्रॉस, आई एम हियर इन पुणे राइट नाउ, coming all the way from Hyderabad. I've been with expert before also in 2015, 16, 17, and post that due to my personal reasons I stopped coming to Pune. But I have trained students across different parts of India. I went to Cochin, I went to Calicut, I went to Ernakulam, I have been to Bangalore, I have been to Bombay with Amit sir also. I have taken classes. So I've been to different locations, and of course I'm back to Pune again with a lot of high spirits and taking some understanding of the subject to next level and understanding things in the best manner. तो बच्चों दो तीन चीजें मुझे पहले बताने हैं आपको. सबसे पहले चीज, आपका अटेम्प्ट कब है? बोलो. एग्जैक्टली, ये चीज आपको पता है ना? राइट. नॉर्मली क्या होता है, हमेशा आपका फाउंडेशन का रिजल्ट जल्दी आता है और सीए में सीए इंटर का क्लासेस जल्दी चालू होता है. बट इस बार आपको पता है रिजल्ट खुद लेट आए तो आपका क्लासेस ऑटोमेटिकली लेट चालू हो गया. तो व्हेन क्लासेस स्टार्ट लेट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये समझना है कि बेटा आपके पास टाइम नहीं है. जब अपने पास टाइम नहीं है, अपने को ये दिमाग में रख के चलना है कि डे वन से वी हैव टू बी वेरी कमिटेड, वेरी फोकस्ड. एंड दैट इज my challenge and my responsibility towards you, that we will take this subject to next level, revise the concepts perfectly, और क्लास के साथ साथ अपना रिवीजन भी खत्म होना चाहिए. दोस्त आज की डेट में टाइम नहीं है बॉस, किसी के पास भी टाइम नहीं है. आदमी के पास खुद का शादी का वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है. डू यू एग्री टू दैट? अरे मैं खुद अभी तक मेरा शादी का वीडियो देखा नहीं यार, 7 साल हो चुका है. मेरे भी बहुत बार मुझे बोलती है यार आज तक कभी शादी का वीडियो देखे नहीं. बोला आप साथ में है तो मैं क्या देखो शादी का वीडियो, हो गया बलात्कार एक बार, कितने बार देखते हैं बलात्कार. Just joking on a lighter note, but that's how it is. We don't have time. We don't have time. When we don't have time, it is our utmost duty that from day one we have to be focused in doing things perfectly. That is very, very important. Do you agree to that? Yes, friends? Right. और मैं आपको ये बोलूँगा दोस्तों कि ये क्लास ना यार, आप सुबह सुबह आते मेरा चेहरे देखने वाले, आप मैं आपका चेहरे देखने वाला हूँ. अगर पूरा दिन मस्त गया तो आप मुझे तारीफ देंगे, अब मैं पूरा दिन अच्छा गया मैं आपको तारीफ देने वाला हूँ. बिकॉज आवर फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस इज स्टार्टिंग विथ यू एंड स्टार्टिंग विथ योर फेस एंड स्टार्टिंग विथ माय फेस. सो आई एम श्योर we'll have a great time with great amount of learning. And in the class, I'll revise the concepts in such a manner, revise sections in such a manner. रात में अगर 1 बजे को उठा आपको पूछूंगा sections, आप पक्का बोल पाएंगे. And I have a track record of making hundreds and hundreds of students getting exemption. And there are a lot of students who got above 70s and 80s. And there's a student of mine who got 96 also. So there are a lot of achievements. And I don't want to talk too much about the achievement because we want to achieve here. More than talking about achievement, we want to achieve here. जो अपने को वो करना है. बराबर ना यार? कितने दिन बोलेंगे वो ये किया वो ये किया, एक न एक दिन हमको भी कुछ करना है ना यार. बराबर दोस्तों? Agreed, sir? Right. Now, one more thing before I start, my dear friends. I want this class to be as interactive as possible. जितना आप इंटरेक्ट करोगे ना सर, उतना ज़्यादा मजा आएगा आपको भी और मुझे भी, ताकि अपना जो कंटेंट डिलीवर होगा, we'll have the best content with enormous good amount of revision. Do you agree to that? और इधर का लोग ना सर सब चुनो हम लोग सब अलग अलग जगह से आए. पुणे का लोकल लोग बहुत कम रहते, अलग अलग जगह से हम लोग आके एक जगह पे बैठे, कुछ पर्पस के लिए बैठे ना सर. तो पहले हम लोग वो पर्पस को फुलफिल करते. बिकॉज आई डोंट बिलीव डूइंग टाइम पास विद सब्जेक्ट.
आई बिलीव इन समथिंग कॉल्ड टाइम पास अलॉन्ग विद सब्जेक्ट. आपका जो टाइम पास कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, मस्ती चल रहा है, वो सब्जेक्ट के साथ साथ होना चाहिए, पर सब्जेक्ट के साथ टाइम पास नहीं होना चाहिए. सब्जेक्ट के साथ टाइम पास हो जाएगा ना, फिर हम टाइम पास में रह जाएंगे. करेक्ट. आपको पता है ना फाउंडेशन का पास परसेंटेज क्या है? 25-26% के आसपास है. इंटर में वो परसेंट नहीं रहता है. इंटर का परसेंटेज बहुत अलग होता है. और फाउंडेशन में जो मेहनत आप लगाए ना, उसका 4 गुना मेहनत इंटर में करना बहुत जरूरी है यार. सर मैं खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो चुका हूँ फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, एंड आई फील डिलाइटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस दैट. और मैं जब फाउंडेशन लिखा ना सर, मेरे सब रिलेटिव्स सब लोग बोले यार यार बेटा फाउंडेशन तो है, अभी खेल बहुत बाकी है, पहले इंटर पास हो जाए फिर फाइनल पास हो, जब बात करते हैं. और जिस दिन मैं इंटर लिख के पास हो गया, आपको लगता है मेरे रिलेटिव्स खुश हो गए? क्या बोले? हाँ एग्जैक्टली बेटा इंटर ही तो पास हुआ, अभी फाइनल बाकी है, पहले वो खत्म कर फिर अपना चेहरा दिखा. जिस दिन मैं फाइनल पास हुआ ना सर, सब नक्शा बदल गया और सबका रिएक्शन बदल गया. सब लोग ये बोलना चालू करे, बेटा हमको पहले से पता था कि तू सीए बनेगा. दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ. सिंपल. अगर हम कुछ करते नहीं लाइफ में तो तब बोलते हैं ये बंदा कुछ काम का नहीं है. जिस दिन अपन कुछ हासिल कर लिए तो सब बोलते हैं ये बंदा हमारा दोस्त है, हमारा ये है, हमारा वो है. करेक्ट सर? एग्री टू दैट? और सर ये सीए कोर्स ऐसा है कि वंस वी गेट इनटू दिस कोर्स, द 2 letters ड्राइव्स अस सो मच. जस्ट दिस 2 letters कॉल्ड सीए इतना हमको आगे बढ़ाता है कि कुछ तो बोलता है यार पीछे, यार सीए कर रहे हैं बस. वो जो फीलिंग स्पिरिट जो कैरी करते ना हम, सब बोलते हैं ये सीए कर रहे हैं, ये सीए कर रहे हैं. जो रिएक्शन उनके चेहरे पे दिखता ना सर, उसके लिए हम सब मेहनत करते हैं. प्राइमरीली वी आर ऑल वर्किंग बिकॉज वी वांट टू अचीव दैट सक्सेस बाय गेटिंग दैट नेम एंड फेम मोर देन मनी. पैसे तो अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक है वो. सबसे पहले हम सीए में इसके लिए आए, रेस्पेक्ट के लिए आए. बराबर नहीं यार? बराबर है. और रेस्पेक्ट के साथ साथ पैसे तो ऑटोमेटिक आना ही है, वो तो आना ही आना है. बट जो रेस्पेक्ट हम यहाँ पे लाते हैं तो बहुत बढ़िया सा रेस्पेक्ट है वो जो सीए को मिलता है, वो बहुत अलग ही रेस्पेक्ट है यार. सिंपल सी बात है, जो बहुत फर्क पड़ता है. जो बीटेक बंदा कैरी नहीं करता है, जो अलग इंजीनियरिंग बंदा कैरी नहीं करता, बीकॉम बंदा कैरी नहीं करता है, जो रेस्पेक्ट हम कैरी करते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल है. क्योंकि हमारे पास ना हमारा नाम फिक्स करने का कुछ ऑप्शन नहीं था. हमारा सरनेम भी हम फिक्स नहीं किए, सिर्फ 2 लेटर फिक्स कर सकते हैं हम, वो भी सीए. और नाम के आगे लगता है पीछे लगता है? वो आगे लगता है. कितना कोर्स है इंडिया में जो आपके नाम के आगे डिग्री लगाने का बेनिफिट है यार. अब ये मत बोलो डॉक्टर है, मैं भी बोलूंगा डॉक्टर है, बट उनमें हमने थोड़ा फर्क है. डॉक्टर पैसे तब कमाते हैं जब पेशेंट का हालत ठीक नहीं है, और हम पैसे तब कमाते हैं जब क्लाइंट का हालत ठीक है. करेक्ट नहीं यार? मतलब मैं खुला बोल, मतलब लेट मी ऑनेस्टली टेल यू दैट I also have a practice in Hyderabad where we have got a firm of about 7 partners. We have a branch in Bombay also. So हम लोग क्लाइंट कभी फोन करके बोलता है ना सर हमने एक नया बिजनेस चालू किया सर, आज 10 करोड़ प्रॉफिट हो गया. मैं जितना खुश होता है जैसा मैं खुद कमाया, मतलब खुशी उसके लिए भी है और उसके साथ साथ मुझे पता है वो काम मुझे ही करना है. और बंदा कॉल करके बोलता है सर प्रॉपर्टी बेच दिया, अभी क्या करूं? मैं बोला भैया आ जाओ, कैपिटल गेन. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? एग्जैक्टली. नाउ moving forward to this discussion, एक सेकंड ना, मार्क्स के अलावा 60 मार्क्स 40 मार्क्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अरे बोलो दोस्तों, पार्टिसिपेट करो यार, ऐसा मत बैठो. मॉर्निंग टाइम है, बोलो यार किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बोलो. सबके लिए. ये सबका साथ सबका विकास आदमी है. बोलो ना यार. टैक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. अरे यार गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर ये फॉलो नहीं करेंगे वाट लगेगी. सिंपल, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है. बराबर ना सर? गवर्नमेंट इतना माहौल क्रिएट करेगी पूरा वाट लग जाएगा, और कोई सेकंड थॉट ही नहीं है. और कोई बंदा टैक्स स्किप कर ही नहीं सकता है आज की डेट में. जब से मोदी जी आए सबका स्क्रू थोड़ा टाइट कर चुका है. बराबर ना यार? हमारे से सडन में टीवी के सामने आता है और बोलता है भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, आज की रात के बाद पता है ना क्या हुआ? एक बार अचानक वापस कब आके बोलेगा 2000 बंद, नहीं पता. कभी ना कभी आके फटका बोल फोड़ने वाला है वो. तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन गाइस, दिस टैक्स सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस. रीजन नंबर 1, एक तो ऐसा है मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट के लिए कोई डाउट नहीं है, 100 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. उसके साथ साथ लेट मी ऑल्सो वेरी क्लियरली टेल यू, एट सीए फाइनल लेवल
you have got 100 marks paper for direct tax and 100 marks paper for indirect tax. So that clearly shows us that this CA inter level will act as a base for your CA final. Do you agree to that? जब ये सब्जेक्ट आपके साथ साथ फाइनल में भी आना है तो दैट क्लियरली सिग्निफाइज टू अस दैट इंटर लेवल पे इसका एक्सपर्टीज और परफेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. और उसके साथ साथ आपको पता है कि आपका इंटर खत्म होते ही या ग्रुप 1 या ग्रुप 2 व्हाटएवर इट इज, हमको करना है आर्टिकलशिप. करेक्ट? आर्टिकलशिप में सीए क्या काम करता है? हाँ, सीए का सबसे बड़ा काम होता है तीन ही चीज. एक तो अकाउंट्स, दूसरा ऑडिट, तीसरा क्या होता है? टैक्स. सीए मतलब मैं खुद भी सीए प्रैक्टिस में हूं, हम करते तीन सबसे ज्यादा काम तीन ही करते. एक तो अकाउंट्स, दूसरा ऑडिट, तीसरा टैक्स. सिंपल. आज की डेट में कोई बंदा नहीं हो सकता है जो बोलता है मुझे टैक्स आता नहीं. एंड इफ ए पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट सेज he does not so no tax, he will depreciate it 100% by straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथड पता है ना अपने को? 100% डिप्रिशिएट हो जाएगा वो. और टैक्स का सब्जेक्ट ऐसा है कि अपने को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड इफ यू डोंट अपडेट यू विल स्ट्रेट अवे आउटडेट. अपडेट करना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट प्रोविजंस applicable for our exam. And in our classroom, we'll discuss all the latest amendment which are applicable for your May 23, November 23 exam. We'll discuss all that in detail. Clear, friends? Amendments का भी अच्छा खासा weightage होता है exam में. Now, let's begin. अब मुझे बोलो, when I wrote here that direct tax and indirect tax, 60 marks and 40 marks, first of all, why government is collecting tax? Why? Why government is collecting tax? Ultimately, to run the system in India, for example, if you take an example of a family, if a family has to run, father has to make money or mother has to make money, both are making money, even more fantastic. Now the point is very clear. If government has to run the system, they need some source of income. What are the primary source of income? Tax. अब देखिए क्या कभी मेट्रो का जब काम चलता है उधर बाजू में लिखता रहता है एक बोर्ड लेगा, your taxes are at work. They put a board, your taxes are at work. Simple सी बात है, because government को tax का बिना tax का वो system चला नहीं सकते. They definitely want revenue which is coming in the form of tax. When we talk about flyovers, infrastructure, development, whatever you talk, all that is happening only with one fundamental source of revenue what government is getting. And the fundamental source of revenue is what? Tax. Which is two types of taxes, direct tax, indirect tax. Correct? Now what is direct tax? Anyone? अरे यार आप चुप मत बैठो यार ऐसा. वंडरफुल. एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया और स्टूडेंट्स तो क्या खतरनाक आंसर लिखते हैं. एक बच्चा लिखा एग्जाम में, मतलब मैं खुद एवेल्युएशन भी करा बहुत बार, बहुत सालों तक एवेल्युएशन में किया था. बाद में सीए इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन दिया कि जो भी फैकल्टी है करेक्शन करना बंद कर दो, तो इसलिए हमने बंद किया. बट ऑलमोस्ट फॉर 3 years 4 years आई हैव डन करेक्शन ऑफ पेपर्स. आई हैव आल्सो डन पेपर सेटिंग आल्सो. उसका भी एक्सपीरियंस है हमको. मतलब सिंस आई बिलोंग टू हैदराबाद एरिया, इन चेन्नई वी यूज्ड टू हैव SARC, Southern Indian Council. आपका वेस्टर्न इंडियन काउंसिल जैसा है, वहाँ पे Southern Indian Council है. So I've been a part of SARC member also. So I've done correction of papers also. कभी कभी जब पेपर करेक्ट करते ना सर, BP रिवर्स होता है. 120/80, 80/120 रिवर्स ही हो जाता है सीधा. वो आंसर देख के होश उड़ जाता है. ये क्वेश्चन आया एक बार 2 मार्क के लिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. स्टूडेंट ने लिख दिया सीधा आंसर, डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली लेविड, इनडायरेक्ट टैक्स इज, बोलो क्या एक्सपेक्ट करो, इनडायरेक्टली लेविड. हो गया काम खत्म. अरे यार आप कुछ भी यार कॉमेडी कुछ थोड़ी है यार. सीधा बोल देंगे कि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लेविड, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली लेविड. दैट इज नॉट द पॉइंट. नो, ऐसा थोड़ी लिखते हैं अपन आंसर यार. अपन कौन से लेवल पे? वी आर नॉट इन बीकॉम लेवल, वी आर इन CA इंटर लेवल बॉस. वी एक्सपेक्ट सम गुड नॉलेज फ्रॉम यू एंड वी वांट दैट प्रॉपर लैंग्वेज टू राइट इन द एग्जाम. आपको जो मन में आता है ना सर, वो जो मन में आता है वो लैंग्वेज लिखेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ मार्क्स नहीं आएगा एग्जाम में. इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर लैंग्वेज शुड बी गुड, योर लैंग्वेज इन द एग्जाम शुड बी गुड. आप अगर लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे, आप बोलेंगे GNSDTC, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर का शॉर्टकट पता है ना, GNSDTC. आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, सीधा लिखते हैं GNSDTC. मेरा बर्थडे पे मेरा एक दोस्त मैसेज किया HBD, मैं रिप्लाई नहीं किया उसको. अरे क्या हैप्पी बर्थडे टाइप करने का टाइम नहीं है उसके पास. समझ गए ना HBD. हाँ बस इंस्टा का जमाना है यार, क्या करेंगे अभी.
तो पॉइंट वेरी क्लियर है दैट यू कैन नॉट राइट वट एवर लोकल लैंग्वेज यू वांट टू राइट. इट हैज टू बी प्रॉपर लीगल लैंग्वेज, देन ओनली मार्क्स विल कम. इफ नॉट, मार्क्स विल नॉट कम. आई कैन बेट यू ऑन दिस. बहुत लोग जो मिस करते हैं मार्क्स इसमें या फेल होते हैं, वट एवर रीजन इट इज ऑल बिकॉज प्रेजेंटेशन इज नॉट गोइंग प्रॉपर. And it is very important that presentation goes very proper. Clear? Now let me tell you what is the difference between direct tax and indirect tax. First and foremost important point. In India, we have got a system of democracy. सुने ना? Democracy क्या होता है? I know मुझे नया नया लग रहा है आपको. पहली बार कुछ फाउंडेशन में तो मैथ्स देखे थे, फाउंडेशन में तो इंग्लिश देखे थे सर, फाउंडेशन में तो लॉ देखे थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अभी आप अचानक आप कुछ और पूछ रहे. बाय द पीपल फॉर द पीपल. टू नहीं है, ऑफ है वो. बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. उसका मतलब क्या है बेसिकली? वी इन इंडिया वी डोंट हैव मोनार्की गवर्नमेंट, वी हैव गॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स वी आर रूल्ड बाय आवर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. हूएवर इज रूलिंग अस, उनको हमने वोट दिया ना सर. सीधा आपने मोदी को वोट नहीं दिया, बट जब आप बीजेपी को वोट किए, कोई पार्टी को इलेक्ट किया है, दैट पर्सन ब्रॉट द लीडर कॉल्ड एज मोदी. सर यस और नो सर? नहीं, महाराष्ट्र का सीन तो अलग ही है. इधर कब क्या होता है किसको पता नहीं है. इधर का लेवल ही अलग है, पूरा स्टाइल ही अलग होता है. मतलब कौन सी पार्टी कब क्या होता है, और शिव बीजेपी पार्टी भी कब आता है वो भी नहीं पता. बराबर ना यार? एग्जैक्टली. इधर कुछ अलग ही चलता है, और पेपर में टीवी में रोज डेप्यूटी सीएम दिखता है सीएम से ज्यादा. इधर तो अलग ही लेवल ही है, तो इसका तो छोड़ दो. तो बेसिकली वी आर रूल्ड बाय आवर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. हूएवर इज रूलिंग अस, वी वोटेड फॉर देम. डू यू एग्री टू दैट? सर दुबई में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. दुबई में एक शेख है, अगर शेख गया तो उसका बेटा बनता है किंग, वो गया उसका बेटा बनता है किंग. आप ये पूछेंगे नेक्स्ट, सर बेटा नहीं है तो? बेटी तो होगी ना यार, तो दामाद बनेगा किंग. अब नेक्स्ट पूछेंगे बेटा नहीं है, बेटे नहीं है, कोई नहीं है, उसका रिलेटिव बनेगा किंग. बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड वोटिंग. सर इंडिया में फुल फ्रीडम है सर, जो करना है करो. इंस्टा पे जो रील डाल दे रील डालो, जो करना है करो. इतना फ्रीडम लेवल है अपने को कि कोई हद ही नहीं है. अगर हम हमारे जैसा लोग जाएंगे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हम तो मर ही जाएंगे. बराबर ना यार? इतना हम गाड़ी कैसे चलाते हैं यार? व्हेन वी ड्राइव द व्हीकल, वो बोलता है वन वे. पूरे में वन वे तो कितना ज्यादा आपको पता है, और वन वे को हम लोग तो टू वे थ्री वे बना देते. वैसा चलती है गाड़ी, हवा में रहती है, कभी नीचे रहती है, ऊपर रहती है. So that level of thing is what we all guys do. That level of freedom we have. Now let me tell you why I told this point is, there are 5 pillars of democracy in India. Pillar number 1, legislature, which basically frames the laws. Legislature frame the laws. Number 2, executive government, which implements the laws. What is number 1? What is number 1? Come on. Legislature. क्या करते हैं legislature? Frame the laws. Number 2, executive government. What do? Implement the laws. Number 3, judiciary, which interpret the laws. अरे यार समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉस. लॉजिक सिंपल है ना यार. कभी कोई प्रोविजन में डाउट है, सेक्शन में डाउट है, कोई प्रोविजन इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, कहाँ जाएंगे अपन? कोर्ट में जाएंगे ना यार, जुडिशरी के पास. हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी गया तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी गया तो घर जाके सो जा. पूरी फिर क्या ऑप्शन है यार? सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ लैंड, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, राइटली सेट. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? चलो कितने पिलर हो गए? नंबर 1, legislature. What does legislature do? Frame the laws. Number 2, executive government. What they do? अरे यार बोलो यार, implement the laws. Number 3, judiciary. What they do? Interpret the laws. Number 4, press. Press पता है ना? आज तक, सोनी, Kapil Sharma. Basically. Now the point is basically that press echoes the public opinion. The public opinion are echoed by the press. Of course, आज के में press कुछ उनको जो मन में आता है वो बोलता है, but primary activity of the press is basically to echo the public opinion. And the last one, very, 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 very important, that is Comptroller and Auditor General. I repeat again. क्या नाम है दोस्तों? Comptroller and Auditor General. Let me give a small example for this. Sir, हम taxes pay कर रहे हैं ना सर गवर्नमेंट को? Sir, yes or no? Is there a possibility that money could be misutilized?
स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑब्वियस है वो तो, ठीक है वो तो छोड़ दो अभी, बट द पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट देयर इज समबडी कॉल्ड C&AG who is the responsible person, one separate department of the government who is basically the responsible person for the purpose of checking the public funds whether they are utilized in a proper manner or not. Technically he is called as watchdog for the public funds. What do we call him? Watchdog for public funds. वो देखना बहुत जरूरी है ना कि क्या यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, चल क्या रहा है वहां पे, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया में किसका पैसा कौन खा रहा है किसको पता नहीं है. सिंपल सी बात है. Come on, these are the 5 pillars of democracy which are very important, and the entire system of taxation works only on this 5 pillars of democracy. So what are the 5 pillars? Number 1, legislature. Number 2, executive government. Number 3, judiciary. Number 4, press. Number 5, comptroller and auditor general. Legislature, what do? Frame the laws. Executive government, implement the laws. Judiciary, very very important, judiciary interprets the laws. Number 4, press echoes the public opinion. Last one, comptroller and auditor general. He is the responsible person for public funds. He is basically called as the watchdog for the public funds. Are we clear with this, my dear friends? So these are the 5 important principles of democracy. Clear, friends? Through which the entire system of governance is running in India. Now, let me tell you one interesting point, that when we talk about this 5 interesting pillars of democracy, I'll discuss one interesting point with you here. Listen very clearly. Sir, when I talk about this word, direct tax and indirect tax, which is for about 60 marks, 40 marks and all. Now the point to be noted is, what is direct tax, what is indirect tax? To decide that, we look at 2 important parameters. Parameter number 1, impact. Parameter number 2, incidence. Come on, what is parameter number 1? Impact. What is parameter 2? Incidence. Sir, impact means who is liable to pay. What is impact? Who is liable to pay. Incidence means who actually pays. In case of direct tax, impact and incidence is on same person. But in case of indirect tax, impact and incidence is on different person. Come on guys, for direct tax, what is the story? Impact and incidence is on same person. So I'll make you write, just relax, कुछ भी लिखो मत, मैं लिखाऊंगा आपको, छोड़ दो, बिंदास. Running notes, working notes, मैं आपको लिखाऊंगा पूरा क्लास में, ठीक है? What is direct tax? Impact and incidence is on same person. Let me give a small example, sir. Sir, Shiva Teja, income कमा रहा है. Who is liable to pay income tax? Shiva Teja is liable to pay income tax. Who actually pays income tax? Shiva Teja. Can I collect from ready, sir? Can I collect that from expert? Speak out. मैं सुनील सर को बोलता हूँ, सर आप मेरा इनकम टैक्स पे करो, वो बोलेंगे सर नमस्ते. सर बराबर या नहीं? नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स. इसका तो एग्जांपल सबसे ज्यादा आप ही जानते हैं. Indirect tax is a tax where impact and incidence is on different person. Let me give a small example, classic example जो आप सबको पता है और लास्ट हफ्ता 10 दिन से आप वही पे कर रहे हैं. क्या है वो? हाँ, जीएसटी. जिधर भी जा रहे हैं बिल्डिंग में पूरा, किधर भी कोई भी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना, फीस दिस प्लस जीएसटी, दिस प्लस जीएसटी, दिस प्लस जीएसटी. वो क्यों बोल रहे हैं दिस प्लस जीएसटी? Because GST is an indirect tax, which is an impact and incidence is on different person. Impact means who is liable to pay. Incidence means who actually pays. Let me give a small example. In case of expert, if I take an example, GST is liable to be paid by expert, but who actually pays is the students. ये expert का कहानी नहीं है, सबका कहानी है. अब ये मत सोचो और expert में GST ले लिया. Simple. That logic is what? आपको अभी डाउट आया होगा, अरे हम क्यों पे करें सर GST? वो खुद ही पे कर सकते हैं ना GST. Government very clearly told that there is a concept of shifting of tax burden. Shifting of what? Shifting of tax burden only in case of indirect tax. Income tax आप shift नहीं कर सकते, but GST आपको shift करना ही पड़ेगा, because GST का final burden will fall on the end consumer only. End consumer only. सर एक एग्जाम्पल दे दो सर. कल शाम में मैं यहाँ पे आया था और नीचे मुझे एक हार्ड डिस्क लेना था एक्चुअली. So ground floor I purchased one hard disk. When I purchased a hard disk, that fellow took from me 4,000 plus GST. मुझे भी plus GST बोला उसने.
4,000 plus. Did I pay GST? Who is liable to pay the GST? Shiva Teja mat bolo yaar. Who is liable to pay the GST? Shopkeeper. But he collected from customer. Correct, my dear friends? Because it is an indirect tax where the person who is liable to pay, person who actually pays, both are not one and the same. But when it comes to direct tax, person who is liable to pay, person who actually pays, both are one and the same. Clear, friends? अब डायरेक्ट टैक्स का कुछ एग्जाम्पल बोलेंगे आप? सबसे पहले तो वो बोलो यार, इनकम टैक्स, वही तो हम पढ़ने वाले यार. इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स एनुअली पे करते सर. अरे क्या यार, आप इनकम टैक्स बोलते फिर एनुअल इनकम टैक्स बोलते, दोनों एक ही तो होता है. नेक्स्ट. और वेरी गुड, समबडी टोल्ड समथिंग, कस्टम्स ड्यूटी. क्या है ये कस्टम्स ड्यूटी? होता क्या है ये? वंडरफुल. इन केस ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कस्टम्स ड्यूटी, जो आप लोग पढ़ेंगे आपका सीए फाइनल में. ठीक है, इंटर में तो नहीं है, फाइनल में पढ़ते हैं अपन. देन इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी. और कुछ बोलो. सेस नहीं यार. एज सच आज की डेट में जीएसटी के अलावा ज्यादा कुछ है नहीं. द रीजन फॉर दैट बिकॉज 2017 से पहले इतना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, क्या नहीं, कितना ज्यादा थे. और गवर्नमेंट ने बोल दिया बेटा वन नेशन, हाँ ये स्लोगन तो देख लेना आप, वन नेशन वन टैक्स, सबको मिला दो, बस सबको मिलन मिलन कर दो और बना दो एक ही टैक्स, जीएसटी. उसकी वजह से लॉट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस गॉट कंसोलिडेटेड एंड दे मेड इट वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? बट गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को टच नहीं किया. हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं, बट इनकम टैक्स को हिलाते तो नहीं. बिकॉज लॉजिक इज वेरी सिंपल. बिकॉज इनिशियली व्हेन बीजेपी केम इन पावर इन 2014, वो लोग बोले हम लोग इनकम टैक्स को एबॉलिश कर देंगे. सब बोले मजाक थोड़ी कर रहे हैं. अब जैसा बोले 15 लाख बैंक में जमा होगा वैसे हो गया ये. कोई स्कूली सी बात है. बिकॉज इनकम टैक्स हटा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है वो. बिकॉज गवर्नमेंट गेट लैक्स ऑफ करोर्स ऑफ रेवेन्यू, लैक्स ऑफ crores of revenue from income tax which can't be removed. और मैं जब सीए कर रहा था 2011 में जब सब सीए पास हो गया, मैं तब से बोल रहे थे इनकम टैक्स अबॉलिश कर देंगे, पर आज तक हुआ नहीं और वो कभी होगा नहीं. बिकॉज गवर्नमेंट गेट्स ह्यूज रेवेन्यू फ्रॉम इनकम टैक्स. आर वी क्लियर विद दैट? स्पीक आउट. अभी आपको एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, बराबर बोलना आंसर. डू यू थिंक इनकम टैक्स पेड बाय शिवा तेजा सर एंड इनकम टैक्स पेड बाय विनोद रेड्डी सर इज वन एंड द सेम? बोलो. Next question. Income tax paid by Vinod Reddy sir, income tax paid by Mukesh Ambani, one and the same? बोलो. Good. अब next question मैं पूछूंगा. ठीक है? I go to a shop, let's say to buy one watch. That fellow told me the watch price is about 1 lakh plus 18% GST. सब जगह प्लस 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 ही लगता है. प्लस what rate? 18% GST. मैं जब गया वो बोले 18% GST. जब विनोद रेड्डी सर जाएंगे उनको 25% जीएसटी बोलेंगे क्या? ठीक है. जब मुकेश अंबानी जाएगा उनको कितना बोलेंगे जीएसटी? अच्छा, मुझे भी सेम है, मुकेश अंबानी को भी सेम है. द रीजन फॉर दैट इज वी से दैट डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव इन नेचर मीन्स हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स. बट वेयरएज indirect taxes are regressive in nature. Regressive in nature means whatever is your income, your tax remains same. अमित सर को या मेरा हो, किसी का भी हो, हमारा सबका जीएसटी का परसेंटेज एक ही है. समझ रहे आप मेरी बात? सर गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी? इनकम टैक्स जो मैं पे कर रहा हूं, जो अमित सर पे कर रहे, दोनों अलग अलग हो सकता है, बट मैं जो जीएसटी पे कर रहा हूं, जो अमित सर जीएसटी पे कर रहे, दोनों एक ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है. तो समझे मेरी बात? और दोस्तों बोलो दोस्तों, come on guys, what are the 5 pillars of democracy? Legislature, executive government, judiciary, press, controller and auditor general. Getting clarity everybody? बोलो यार, come on speak out everybody. Good. Judiciary क्या करता है? Judiciary frame the laws, interpret the laws. बच्चा बोल रहा है सर, अब बीच वाला कैसा पूछते हैं यार, पहले वाला पूछना ना यार. हम कैसे भी पूछेंगे यार, कॉन्सेप्ट तो आपको बोलना है. चलो, CNDG का फुल फॉर्म क्या है? ये एक बार एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, बच्चा लिखा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल.
अरे ये कंट्रोलर कौन है भैया? वो कंट्रोलर नहीं है, वो क्या है उसका नाम? कंट्रोलर. ही इज नॉट ए कंट्रोलर. वो कुछ कंट्रोल नहीं करता है, वो वॉच करता है बेसिकली. समझ में आ रहा है ना सर फर्क? सर आप कुछ समझो यार, कंट्रोल और कंट्रोल में कितना ज्यादा फर्क है. और बच्चा बोलता है मैं सब लिख दिया, मार्क्स नहीं आ रहा है, इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिया. ऐसा कैसा होता है? तुम्हारा गर्लफ्रेंड का नाम प्रिया है, पी छोड़ के तुम रिया लिखते हैं. प्रिया चुप बैठेगी क्या? हो गया ना उस दिन बलात्कार फिर. अरे बोलो यार, आप खुद बोलो यार. आपका गर्लफ्रेंड का नाम प्रिया है, पी छोड़ के हाय प्रिया लव यू रिया लिखे आप, खत्म ना उस दिन, कहानी खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद, हो गया ब्रेकअप. क्या ऐसा चेहरा बना दिया? एक्सपीरियंस है क्या उसका? नहीं ना? हाँ ठीक है बस. सर समझ गए यार. द ओनली इंटेंशन व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस इज बिकॉज छोटा सा लैंग्वेज में क्या होता है, मीनिंग बदल जाता है पूरा. दैट मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड. और सीए इंटर लेवल पे ना वी कैन नॉट एफर्ट टू डू दैट मिस्टेक्स. वो हो नहीं सकता है, मिस्टेक हो नहीं सकते ये लेवल पे. दैट लेवल ऑफ परफेक्शन इज रिक्वायर्ड बिकॉज हम सीए के बच्चे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते यार. एट एनी कॉस्ट आवर लैंग्वेज शुड बी सो एक्यूरेट, सो परफेक्ट दैट इट हैज टू ड्राइव द मैसेज व्हाट वी वांट टू गिव. बिकॉज चीजों को समझने के दो तरीका होता है. एक तो वन व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड, सेकंड व्हाट अदर पर्सन वांट्स यू टू अंडरस्टैंड. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका लैंग्वेज बहुत क्लियरली लिखना बहुत जरूरी है. आर वी क्लियर फ्रेंड्स? स्पीक आउट. राइट फ्रेंड्स, in your class I'll give you two modules, module 1, module 2. These two basically for your understanding of the subject in the classroom. दो मॉड्यूल देंगे, एक ही मॉड्यूल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, तो हम दो मॉड्यूल में स्प्लिट किया है सब्जेक्ट को. पहले एक मॉड्यूल देंगे, उसके साथ साथ थोड़ा जब 3-4 चैप्टर खत्म होता है फिर अपन सेकेंड मॉड्यूल में भी आ जाएंगे. ठीक है ना सर? उसके साथ साथ I'll give you one more material called question answer book, which also contains your MCQ, जो सबका फेवरेट है. क्या है MCQ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इंटर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, पता है आपको? कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 30 मार्क्स. गुड यार, बहुत सबको क्लैरिटी है. 30 मार्क्स के लिए MCQs भी आता है. बहुत लोगों को लगता है MCQ बहुत ईजी है, बट अकॉर्डिंग टू मी देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. नंबर 1, जितना स्कोर करने का पॉसिबिलिटी है ना सर, उससे ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्क्स जाने का. डू यू एग्री टू दैट? बिकॉज अगर एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं, 2 मार्क तो आएगा. MCQ में कुछ भी गड़बड़ कर दिया, 2 मार्क के MCQ है, उसमें आधा मार्क देंगे क्या? आधा टक्का 1% कुछ मार्क आता है क्या? ठीक है, बच्चा ने थोड़ा सा सर्कल कर दिया, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया, ऐसा कुछ होता है क्या? स्पीक आउट यार. तो MCQ में मार्क्स जाने का भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट स्कोरिंग पॉसिबिलिटी ऑल्सो इज हाई. लेट्स सी द पॉजिटिव साइड. और नेगेटिव मार्किंग तो आज तक है नहीं, तो खुश हो जाओ. ठीक है, स्पीक आउट यार. बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको जो मन में आए वो लिखेंगे, बट फिर भी क्लैरिटी के साथ लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर बुक एंड ऑल्सो MCQ बुक आई विल गिव यू. एंड फाइनली आई विल गिव यू द फोर्थ थिंग, दैट इज योर समरी मटेरियल. और ये आपको लास्ट में मिलेगा, क्योंकि पहले काम तो खत्म करें फिर समरी देखें. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? दैट समरी मटेरियल विल हेल्प यू टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट. जब अपना क्लास खत्म हो जाएगा, 2-3 महीने गुजर जाएंगे, ग्रुप 2 भी खत्म होने वाला है क्लासेस आपको, वो टाइम पे आपको इनकम टैक्स बुक देखने का मन किया, 2 मॉड्यूल देखेंगे, फिर सोचा इतना ज़्यादा है बाद में पढ़ेंगे, तब आपको ये समरी मटेरियल बहुत हेल्प करेगा फॉर यू टू रिवाइज. क्लियर फ्रेंड्स? दिस थिंग्स इज व्हाट आई विल गिव यू. एंड एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो कंडक्ट सम एग्जाम्स इन द क्लासरूम एंड विच आई विल ओनली करेक्ट, नॉट समबडी. मैं ही करूँगा काम, मुझे किसी से करवाना नहीं है. मतलब आई डोंट लाइक इट, आई लाइक ओनली व्हेन आई चेक इट एंड आई डू इट. दैट आई ओनली डू. एंड इन द क्लास वी विल सॉल्व लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. डेफिनेटली आप लोग कैलकुलेटर कैरी करना ही करना. आज है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट कल से तो लेके आना ही आना है. आज छोड़ दो, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे ना चलेगा, बट कल से तो लेके आना है. ठीक है दोस्तों, स्पीक आउट. और एक अलग बुक मेंटेन करो इनकम टैक्स के लिए, जिसमें हम पूरा जो भी पॉइंट्स लिखते हैं रनिंग नोट्स क्लास में, वो सब लिखने के लिए बहुत काम आएगा आपके लिए. ठीक है, डन. दिस इज व्हाट इज द इंट्रोडक्शन व्हिच आई वांटेड टू टेल यू अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट वी हैव टू डू. रेडी? Come on guys, what are the 5 pillars of democracy? Legislature, executive government, judiciary, press, comptroller and auditor general. Judiciary, what do? Interpret the laws. Press echoes public opinion. Correct? What are the 2 types of taxes? Direct tax and which tax is regressive in nature? Ha. Exactly. Direct tax is what in nature? Higher the income. Are we clear with that, everybody?
All of us? Shall we start? Right. Now listen to next point. Then we'll start writing some points. Listen, friends. Now some interesting point. Let me tell you that there is one article number 265 of Constitution. सर हम कॉन्स्टिट्यूशन पता है अपने को? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सर बोल रहे सर हम बोले आपको पता है, पूछो मत क्या है, होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? बोलो यार. इंडिपेंडेंस डे पता है? रिपब्लिक डे पता है? रिपब्लिक डे हाँ क्यों मनाते? चॉकलेट खाने. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Wonderful. Constitution is nothing but a legal framework which has been designed where any law for that matter, which is coming into India in existence, your Partnership Act, Sale of Goods Act, whatever act you talk about, every act is coming by deriving the power from Constitution of India. Because Constitution of India is the legal framework, a supremacy law designed for the purpose of giving power to the government to frame the laws. Who has designed this constitution? Yeah? Wonderful. Ambedkar. Somebody told president, अरे बेटा यार जो मन में है वो मत बोलो यार, पूरा मीनिंग बदल जाएगा. इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल कलाम. द्रौपदी मुर्मू. गुड. महाराष्ट्र का सीएम कौन है नहीं पूछूंगा, शाम तक बदल जाएगा वो. ठीक है, done. Let me proceed. Now why I am taking this point is Article 265 of the Constitution says no tax shall be levied or collected except by authority of law. Come on friends, पढ़ो एक बार क्या लिखा हमने? No tax shall be levied or collected except by authority of law. क्या समझ में आ रहा है इसमें? Let's interpret that word by word. No tax shall be levied. Levied means imposed. No tax shall be imposed or collected, taken, except by authority of law. That means law must give power to the government. Law must give power to the government to collect what? Tax. So basically you have to understand that government has got this power from the Constitution to impose the taxes. They have got power from the Constitution to impose the taxes. Getting clarity, friends? Now one point let me tell you very clearly here, which you have to understand, that Constitution in 7th schedule. Which schedule? 7th schedule, they are basically given 3 lists. Number 1, union list. Number 2, state list. Number 3, concurrent list. Now what is the point here? Union list contains those items of taxes. Union list contains those items of taxes on which power is there with central government to impose such tax. Now let me ask you one question. Income tax कौन लेवी कर रहा है बेटा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? सॉरी, सेंटर कलेक्ट करता है, सेंटर थोड़ा बहुत शेयर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो अलग बात हो गया, बट पावर किसके पास है? डू एग्री टू दैट? कस्टम्स, स्पीक आउट. सेंट्रल गवर्नमेंट. वेरी गुड आंसर. सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है यार, ऑब्वियसली सेंट्रल ले लेता है यार, स्टेट थोड़ी ना लेगा पैसा उसका, बराबर नहीं यार. अब स्टेट गवर्नमेंट का आप एग्जांपल बोलो, एक बोलो. व्हाट इज दैट? जीएसटी का, सीजीएसटी, एसजीएसटी वो बोल रहे क्या? नहीं यार, उसके अलावा कुछ और. सॉरी, VAT. There used to be some tax called VAT, which stands for value added tax. Even today government is collecting that on alcohol liquor for human consumption. So pata hai na alcohol liquor? Exactly, whatever kind of alcohol liquor it is, on alcohol liquor for human consumption, state government collects taxes. So you have to understand very clearly that union list contains those items of taxes on which power is there with
central government to levy and collect the tax. State list contains those items of taxes on which power is there with state government to levy and collect the tax. Concurrent list contains those items of taxes on which power is there with central and state together. Central and state together will levy and collect the tax. Classic example, GST. Because GST is a tax which is levied by central and state together. आपने कभी ऑब्जर्व किया, कभी होटल गए जब या किधर गए जब उसमें देखे क्या बिल में CGST, SGST, एक सेंटर एक स्टेट, जैसा मूवी का डायलॉग होता है ना, एक तेरा एक मेरा दो तेरा ना, समझ गए बस, स्टूडेंट को सीन भी याद आ गया. Wonderful. Sir, clear with this point everybody? So what are three lists? Union list, state list, concurrent list. Union list contains those items of tax on which power is there with central government. State list, those items of tax on which power is there with concurrent list, those matters on which power is there with central and state together. Central and state together. Are we getting clarity everybody? Sir, GST से पहले इंडिया में ऐसा कोई टैक्स नहीं था जो सेंटर एंड स्टेट टुगेदर लेवी करता था. देयर वाज ओनली ए टैक्स व्हिच इज लेविड बाय सेंटर और देयर इज ओनली ए टैक्स लेविड बाय स्टेट. दोनों मिलकर कलेक्ट करना आसान नहीं है सर, क्योंकि इंडिया में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है सबको, दोनों साथ में काम करना बहुत मुश्किल है. फ्रेंड्स, अग्री टू दैट? एग्जैक्टली. सर, गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट एवरीबॉडी? ऑल ऑफ अस माय डियर फ्रेंड्स. इनकम टैक्स कौन सा लिस्ट में? इनकम टैक्स कौन सा लिस्ट में? स्पीक आउट. In union list, there is an entry number 82, which has given power to the central government to levy what? Income tax. To levy? Now I'll ask you an interesting question which you have to answer me very clearly. When did income tax start in India? कोई आइडिया है? इनकम टैक्स इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है? We have got one Income Tax Act 1961. इसका मतलब 1961 से पहले इनकम टैक्स है नहीं? बोलो. So speak out. Sir, all section numbers, whatever I'm going to teach you, is all from Income Tax Act 1961. सबसे पहले बच्चे को डाउट आता है, सर 1961 बोल रहे हैं, मतलब इसका पहले टैक्स है नहीं क्या? There used to be an act called Income Tax Act 1922. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 से पहले टैक्स है क्या? क्या लगता है आपको? बोलो सर. 1922 प्री इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है? 1922. एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, 1922 से पहले भी इनकम टैक्स है. इनकम टैक्स 1860, इनकम टैक्स एक्ट 1860. 1860 became 1922. 1922 became 1961. उसके बाद आज तक कोई नया एक्ट आया नहीं. So even today we are following Income Tax Act which year? We are still following Income Tax Act 1961. But why I'm telling this point? Because एग्जाम में कोई नहीं पूछेंगे कि 1922 था क्या, 1860 था क्या, वो सब कोई पूछेंगे नहीं. बट आपको कोई ना कोई पूछेंगे ना, 61 से पहले टैक्स था ही नहीं क्या? आप जाके बोलेंगे हमारे सर तो 61 ही बोला है, मतलब उससे पहले टैक्स है ही नहीं. ऐसा तो हो नहीं सकता ना यार. सर, दिस वाज एक्चुअली इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट to collect money from the public. They imposed taxes. आपने वो पिक्चर देखे ना, लगान? आमिर खान क्रिकेट खेलता है. क्रिकेट क्यों खेलते हो मैच? हाँ, गवर्नमेंट वो ब्रिटिश वाले को पूछते हैं, हम क्रिकेट मैच अगर जीत गए तो आप हमसे टैक्सेस कलेक्ट नहीं करना चाहिए. अरे बराबर ना यार. अरे आप ये मत सोचो मैं हिंदी मूवीज देखता नहीं, साउथ से तो पूरा मूवीज देखते हैं हम, और आप लोग हमारे मूवीज भी देखते हैं आजकल पूरा. अरे बराबर ना यार. बाहुबली 1 देखे ना आप लोग? 2 भी देखे ना? हाँ. मैं झुकेगा नहीं, करेक्ट. वो बेसिकली साउथ का ही मूवी है, ठीक है. एनीवेज, व्हाटएवर इट इज, आजकल जमाना गया, साउथ का मूवी है तो टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, आजकल पूरा हो गया इंडियन मूवी. करेक्ट नो? हाँ, हर मूवी अपने को मजा आता है. और लिटरली मैं ये बात बोलूँ सर, यूट्यूब में हर तेलुगु मूवी का, हर साउथ का, तमिल मूवी का पूरा डब्ड वर्जन मिलता है यूट्यूब में. और सोनी मैक्स चलाओ, हर वीकेंड पे एक मूवी आता है रात में, जो साउथ का मूवी दिखता है, हमारा हीरोज का पूरा ओवर एक्शन दिखता है आपको. बराबर ना यार? ये मारेगा वो पूरा उड़ेगा ऊपर और पूरा नीचे आएगा 5 मिनट के बाद. वैसे एक्शन सीन होता है हमारे पास. एग्जैक्टली. कम ऑन, कमिंग बैक टू डिस्कशन नाउ. सो व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? लेजिस्लेचर, executive government, judiciary,
Press, Comptroller and Auditor General. Now, when we're talking about this tax, my dear friends, this Income Tax Act 1961 is what we are going to learn in the classroom, and that is what we are actually following practically also. After 1961, new act has not come. But prior to that, there was 1922 Act. Prior to that, there was 1860 Act. And the history of income tax dates to ages. From ages, this taxes is there in India. It's not brought by Indian democratic government. It is actually brought by British government, which we continued. Which we have continued. Getting clarity? Speak out. Is there a finance ministry in India? Who is the finance minister of India? Our Madam Ji, the most powerful lady, Nirmala Sitharaman. वो जब भी टीवी आते टेंशन में आते हैं हमको, बिकॉज क्या नया रूल आएंगे, क्या नया प्रपोजल लेके आएंगे. बराबर यार सर, हम आई मीन बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी आर मोर कंसर्न्ड ओनली विथ हर, आई मीन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. समझ में आ रहा है ना सर सबको? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है दोस्तों? बोलो. चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग सम पॉइंट्स. यस माय डियर, पूछो. चलो स्टार्ट. आज का डेट लिखो, बहुत शुभ दिन है. वेरी नाइस, गुड डे, बिकॉज वी स्टार्टेड. अभी बच्चा डेट देख रहा है आज का, पता नहीं क्या डेट क्या है. क्या है आज का डेट? 23rd. प्लीज लिखो. Shall we start? Everybody? Yeah? So in our syllabus, which subject we are learning? Taxation. How many marks is income tax? 60 marks. Very scoring area which we have to work very hard. Clear my dear friends? और बच्चों आप ये चीज़ ध्यान से समझो कि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है. वैसे से ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको 2 ग्रुप करने का है और ऑलरेडी आपका रिजल्ट लेट आ चुका है, तो थोड़ा सा टाइम आपका जा चुका है. तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया टाइम पास करेंगे साथ साथ में, बट सब्जेक्ट के साथ टाइम पास नहीं करना है. मज़ा आता है स्टार्टिंग में, जब एंड में जाके, जब सिलेबस खत्म नहीं होता है, एंड में जाके कुछ टाइम पास होता है, एंड में जाके रिजल्ट लगती नहीं है, तब मालूम पड़ता है इसका प्रेशर क्या है. क्लियर? नो, आई डोंट वांट यू टू कैरी द प्रेशर. डे 1 से आप सिंसियर रहो, डे 1 से आप एंजॉय करो क्लास को, एकदम मस्त एंजॉय करेंगे क्लास में. ठीक है ना सर? डन. राइट द फर्स्ट पॉइंट. देयर आर 5 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. देयर आर 5 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. There are what sir? 5 pillars of democracy. Number 1. नीचे लिखो one after other. Number 1. Legislature. Number 1. Legislature. Legislature. Put a hyphen. Put a hyphen and write. What do they do? Frames the laws. Legislature frame the laws. Frame the laws. Number 2. Executive government. What do they do? Executive government. Executive government implement the laws. Number 3, judiciary. क्या करते दोस्तों? Interpret the laws. Come on, what is number 4? Press. What does press do? Echoes public opinion. 5th one स्पेलिंग बराबर लिखना दोस्तों. क्या नाम है उनका? Comptroller and Auditor General. He is basically the watchdog for public funds. Exactly.
Comptroller and Auditor General, who is a watchdog for public funds. Getting clarity, friends? They are the 5 pillars of democracy. Are we clear, friends? Everybody? What is third one? Fifth one? Number 1? Legislature, what do they do? Who interprets the laws? Exactly. Are we clear with that? Next point. Next point. There are 2 types of taxes. So when you are writing points, please use bullet points. No, don't write paragraph, essay writing you don't do. Let's use bullet points. Maybe a star or a arrow mark, something like that. Okay? Okay? Sure. There are 2 types of taxes. That is, there are 2 types of taxes. That is, direct tax. What is number 2? Indirect tax. Direct tax is a tax where impact and incidence is on same person. Indirect tax is a tax where impact and incidence is on different person. Come on, clear? Direct tax is a tax where impact and incidence is on same person. Indirect tax is a tax where impact and incidence is on what person? Beta, the next point both important. Direct taxes are progressive in nature. Whereas indirect taxes are what in nature, sir? Regressive in nature. Direct taxes are progressive in nature, whereas indirect taxes are regressive in nature. So प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है बेटा? दोस्तों बोलो, डायरेक्ट टैक्स का प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? हायर द इनकम, हायर द टैक्स, लोअर द इनकम, लोअर द टैक्स. रिग्रेसिव का मतलब irrespective of your income, tax remains same. क्लास के एग्जांपल जीएसटी. कोई भी बंदा उसका जीएसटी का रेट सेम होता है. Correct, no, my dear friends? For example, let's take an example for a cake. For a cake, there is a GST rate of 18%. Whether you buy or I buy or Mukesh Ambani buys, GST rate remains same for everybody. Income level से GST का rate का फर्क नहीं पड़ता है, because that is regressive in nature. But जो tax pay करने का रहता है, income tax, that makes a difference. Clear, friends, everybody? All of us? So direct tax is what in nature? Progressive in nature. Indirect tax is what in nature? Regressive in nature. Clear, my dear friends? Next point. There is a concept of, next point, there is a concept of shifting of tax burden. There is a concept of shifting of tax burden. There is a concept of shifting of tax burden only in, there is a concept of shifting of tax burden only in, क्या बेटा? हाँ? Indirect tax, right, properly. There is a concept of shifting of tax burden only in indirect tax. Clear, my dear friends? That is कैसा लिखेंगे आप? आइए please. That is, tax is passed on. That is, tax is passed on to the end consumer. Tax is passed on to the end consumer. Final consumer पे burden होता है sir. Simple सी बात है. That is the reason why we say indirect tax is a tax where impact and incidence is on different person. Liable एक बंदा है,
पर इंसिडेंस गिरता है दूसरे बंदे पे. Clear friends? But direct tax impact and incidence is on same person. So getting clarity? Everybody? Next point. As per Article 265 of the Constitution, as per Article 265 of the Constitution, as per Article 265 of the Constitution, Article what, sir? 265 of the Constitution. Write this. In quotations, you write. Inverted commas, you write. No tax shall be. No tax shall be. No tax shall be levied or collected no tax shall be levied or collected. No tax shall be levied or collected except by what, sir? Authority of law. So इसका meaning समझ गए ना आप लोग? Unless law gives a power, they can't collect any tax. Just like that. Clear? Come on, repeat again. What is the meaning of this? Unless power is being given to the government, they cannot collect or impose any taxes. Levy means what? Impose. Collect means actually collect. Friends, everybody, how many pillars are there in democracy? How many types of taxes are there? Which one is progressive? Which one is regressive? Indirect tax. Come on, good. Next. Take this table. Constitution 7th schedule I have given 3 lists: union list, state list and concurrent list. So done? ये डायग्राम लिख दिया आपने दोस्तों? चलो नीचे लिखते हैं. Union list contains those matters. Union list contains those matters. Union list contains those matters. Union list contains those matters on which power is there. Union list contains those matters on which power is there. On which power is there exclusively with. Union list contains those matters on which power is there exclusively with whom, sir? Central government. Clear? Speak out. Below write entry number 82. Next line write down. Entry number 82 deals with. Entry number 82 deals with power to levy. Entry number 82 deals with power to levy income tax. Entry number 82 deals with power to levy what tax, sir? Income tax. That's it. Next point. State list contains those matters. State list contains those matters on which state list contains those matters on which power is there. On which power is there exclusively with. State list contains those matters on which power is there exclusively with state government. Write an example. Tax on alcohol liquor for human consumption. Tax on alcohol liquor for human consumption. Tax on alcohol liquor for human consumption.
tax on alcohol liquor for human consumption. Is that clear? Next, last one. Concurrent list contains those matters. Concurrent list contains those matters. Concurrent list contains those matters on which power is there. Power is there. On which power is there with center and state together. On which power is there, center and state together. Power is there with center and state together. I hope this point makes sense, everybody. So friends, which schedule deals with 3 lists? 7th schedule of the Constitution. What are 3 lists? Union list, state list, concurrent list. Union list contains those matters on which power is there with central government only. State list, state government only. Concurrent list, both center and state together. So my dear friends, today is the first and last day. We are going to talk about state list, concurrent list. Because from tomorrow onwards, we are not concerned with state list, concurrent list. We are concerned only about union list. That too in that entry number 82. Because our syllabus is only restricted to income tax of 60 marks. Correct? No. When your GST start, that time they'll talk about your state list, concurrent list, CGST, SGST, IGST, that, this and all that story will come. But we will restrict only to our income tax. Are we clear, everybody? Speak out. So income tax, direct tax और indirect tax. अरे यार क्या डाउट रुक गया क्या? डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स कोई डाउट ही नहीं है उसमें. इट्स अ टैक्स वेयर, आज के बाद बोलेंगे क्या? डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली, ऐसा बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन सेम पर्सन. इम्पैक्ट का मतलब लायबल, इंसिडेंस मीन्स एक्चुअली पेइंग. दोनों एक ही होता है. शिवा तेजा इनकम कमाए, शिवा तेजा खुद जेब से टैक्स भरता है. कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता. बट आई कैन शिफ्ट ओनली माई indirect taxes. Which one is progressive? Direct tax. Which one is regressive? Exactly. Are we clear with all these points, everybody? Speak out, my dear friends. Now listen very clearly. Now listen, friends. When we talk about this direct tax, indirect tax and all, when we are concerned specifically about direct tax, we are talking about something interesting. आपको लगता है ये इनकम टैक्स हम हर महीना पे करेंगे? कब पे करना है? Annually. Good. But let me tell you an interesting point. What is the meaning of this word year, sir? Year का मतलब क्या होता है? मैं सिर्फ आपसे पूछा year का मतलब क्या है. आप मुझे वो सब मत बोलो. I just asked you what is year. Year का मतलब क्या है? Period of 12 months. हो गया आंसर, इतना ही है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. कैलेंडर ईयर 1st Jan to 31st December. लास्ट वन आपको पता है क्या है? पूछने वाला हूं मैं. व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? 1st April to exactly. Sir, let me tell you, before 1989 people used to follow whatever system they want, they followed. People followed Diwali to Diwali, Dasra to Dasra, Valentine's Day to Valentine's Day, one girlfriend's birthday to other girlfriend's birthday. Whatever they want to follow, they followed. I mean, I'm just joking, but the only point is that there was no system saying that you have to follow this, you have to follow that. आपको 12 महीने का accounts दिखाना है हमको, इतना ही बात था. But they clearly told in 1989, telling that you have to follow a uniform year. And that uniform year should be uniform financial year. That is 1st April to 31st March. Can you please tell me, presently, which financial year is going on? Financial year 22-23. इसका मतलब क्या है? We are in between 1st April 22 to 31st March 2023. Do you agree to that? So speak out, getting clarity on this point, everybody. So we follow a concept called uniform financial year, where we don't have to follow calendar year concept. We clearly follow the concept of uniform financial year. That is 1st April to 31st March. कोई second thought ही नहीं है. And henceforth, whenever I say 22, 23, 24, इसका मतलब जानते हैं ना आप? समझ में आ गया ना?
1st April 22 to 31st March 23. 1st April 23 to 31st March 24. That's a straight meaning. That's a straight meaning. 22 to 23 का मतलब Jan to December नहीं है. That is very clearly April to March. 1st April to 31st March. Getting clarity, everybody? Friends? Are we clear with this point, everyone? Right. So friends, now listen. Now, when we want to learn income tax law, income tax what, sir? Law. We basically want to learn income tax law only, sir. Now, to understand this income tax law, there are basically 5 sources. There are basically 5 sources to understand income tax law. Number 1, Income Tax Act 1961. पता ना अपने को ये? What the first one? Income Tax Act 1961. In fact, that is the one what we are going to learn in detail, and whatever section numbers I am going to tell you, that section numbers is of Income Tax Act 1961. जो भी सेक्शन नंबर मैं आपको बोलूंगा क्लास में, वो सब सेक्शन नंबर इनकम टैक्स एक्ट का ही है. क्लियर है दोस्तों? इनकम टैक्स एक्ट विच ईयर? नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड इनकम टैक्स रूल्स 1962. Now one thing very important you have to understand here, my dear friends, that is, what is a rule? Sir, act basically says what to do, what not to do, how to do, how not to do is given by rules. फर्क समझ में आया सर? एक्ट बोलता है डिप्रिसिएशन क्लेम करो. सर आप अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन किए ना सर? स्पीक आउट. आपका अलग अलग मेथड है, SLM, WDV, सम ऑफ डिजिट मेथड, व्हाट नॉट, अलग अलग मेथड सीखे आपने. बट इनकम टैक्स में हम एक ही मेथड करने वाले, वो है WDV. दैट मेथड इज कॉल्ड WDV. व्हाट इज WDV? रिटर्न ऑन वैल्यू. कोई स्पेशल केस है जिसमें SLM फॉलो करते हैं, बट जनरली वी फॉलो WDV. बट इसमें इनकम टैक्स में कुछ अलग सा कहानी है, वो क्या है हम डिस्कस करते हैं बाद में. ठीक है ना यार? फर्स्ट डे को हम नहीं जाते उसमें, बाद में घुसते उसमें. क्लियर है सर एवरीबडी? स्पीक आउट. नाउ द पॉइंट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट you have to charge depreciation. That is told by act. That is told by what rate you have to charge is given by rules. Clear sir? Friends, act का rule का purpose समझ में आ रहा है सर? सर act सब कुछ बोल नहीं सकता सर. act सब कुछ बोलेंगे तो the most complicated act in India is already income tax. अगर income tax act में सब कुछ बोलते हैं, already income tax का book कितना बड़ा है, अगर वो सब कुछ भी वही बोलते हैं तो इतना बड़ा हो जाएगा. फिर already लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, फिर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों यार? क्लियर है? सो फर्स्ट वन इनकम टैक्स एक्ट, सेकंड वन इनकम टैक्स रूल्स. आपके सिलेबस में एक्ट में सेक्शंस है, वैसे पूरे सेक्शंस है नहीं, थोड़ा बहुत सेक्शंस है आपके सिलेबस में, और रूल्स में थोड़ा इधर उधर थोड़ा 4-5 रूल्स है बस. जब फाइनल में आएंगे तो ऑब्वियसली नाम ही है फाइनल, तो ऑब्वियसली लेवल अलग हो जाएगा. क्लियर है यार? नेक्स्ट व्हाट फर्स्ट वन? Income Tax Act 1961. Second one, Income Tax Rules 1962. Third one, Annual Finance Act. दोस्तों क्या लिखा मैंने उधर? Annual Finance Act. सर हर साल फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता क्या यार? हाँ, बजट. कब आता सर बजट? ये super yaar, fantastic. Once upon a time it used to come on last day of February, but later on they changed it since last 2 years. Last 2 साल से 1st February को लेके आ रहे. बजट में बताते क्या है? क्या बताते हैं बजट में? और आप इतना मस्त जवाब दिया यार, ये भी तो बोल दो. प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, प्रपोज्ड इनकम, हम टैक्स रेट ये चेंज करने वाले, डिडक्शन ये चेंज करने वाले, आज के बाद ये टैक्स ये चेंज हो जाएगा. बराबर ना यार? एक दैट सब बोलते रहते, जिसको अच्छा लगा वो ताली मारते, जिसको अच्छा नहीं लगा वो चाटा मारते. बस सिंपल सी बात है. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? सो लॉजिक इज वेरी सिंपल दैट एनुअल फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर सम और अदर चेंजेस कीप हैपनिंग. नाउ बाय फर्स्ट पॉइंट टू यू, आपने बोला बजट, मैंने बोला फाइनेंस एक्ट. दोनों का वर्ड्स में फर्क है ना सर? हाउ विल बजट बिकम फाइनेंस एक्ट? आई विल टेल यू नाउ. बजट is first presented in the parliament by the finance minister. Budget is then approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. Lower house. Which one is lower house? Lok Sabha. Upper house is Rajya Sabha.
and Lok Sabha members are elected, Rajya Sabha members are nominated. ये चीज पता है ना आपको? एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी पूछ रहा हूं बस नॉलेज के लिए, ठीक है? So this budget is approved first by Lok Sabha, then Rajya Sabha, then it becomes a finance bill. It becomes a finance bill. Then the bill gets the assent means confirmation of president. Only after a president signs, this finance will become act. इंडिया का प्रेसिडेंट में सबसे बड़ा काम एक ही है, साइन करने का, उससे ज्यादा काम कुछ करते नहीं. मतलब when you go to countries like US and all, president has got a major role to play. There is no prime minister, but in India we give so much importance to prime minister. President role or your governor role is more restricted only towards signing activity. इसलिए ज्यादा एज लोगों को बिठाते वहां पे, बिकॉज उनका ज्यादा कुछ फिजिकल काम रहता नहीं है. सो दिमाग चलाओ, बस चेक करो, साइन करो, इतना ही काम है उनका. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? And to reach that stature, they should have achieved back end a lot. Then they'll get that status. Friends, correct? Everybody? चलो first वाला क्या है? Income Tax Act, which year? Number 2, Income Tax Rules, which year? 1962. तीसरा क्या है बेटा? Annual Finance Act. Clear? Fourth one, interesting. Circulars and notifications. Sir, circulars are more of clarificatory in nature. Come on. Circulars are more of what in nature, sir? Clarificatory in nature. Basically, they'll clarify. If you get any doubt, income tax department will issue a circular saying that इसका meaning ये है. हम जो बोलना चाह रहे हम ये बोलना चाह रहे. Whenever there is a doubt in interpreting something, they give circular as a clarification. What is notification? Notification is only to notify some rate or notify some change. Circular is of clarification. Notification is not a clarification. Notification is only to notify. For example, sir, शाम में आपको वापस बोलते हैं, शाम की क्लास के बाद कल सुबह वापस मिलते हैं 8 बजे. आपको पता है 8 बजे मिलना है, फिर भी हम बोल रहे हैं, वो सर्कुलर नोटिफिकेशन है. Notification. I'm not clarifying anything to you. I'm just what I'm doing you, notifying you. I'm reminding you. So getting my point? That's kind of notification. Notification does not clarify anything. It just notifies. In notification, ये rate ये है, ये हमने notify कर दिया. उसमें clarification कुछ नहीं है. Clear, friends? Now, under a Ministry of Finance, under a Ministry of, let me go a little down and then come back again. Friends, under a Ministry of Finance, there is a Department of Revenue. Under Ministry of Finance, there is a Department of what, friends? Revenue. उनके नीचे है one department called CBDT, which stands for Central Board of Direct Taxes. दोस्तों CBDT का full form क्या है? Central Board of Direct Taxes. In fact, that is the authority which gives that circulars and notification. समझ में आ रहा है? Who gives circulars notification? CBDT. What is CBDT full form? Central Board of Direct Taxes. Getting clarity? For GST there is something called CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. वो अलग है. But हम focus कर रहे हैं यहाँ पे CBDT के ऊपर. CBDT का full form क्या है दोस्तों? Central Board of Direct Taxes. And last one source is there for income tax law. What is number 1? Income Tax Act. Which year? 1961. Second one. Income Tax Rules. Which year? 1962. Third one. Annual Finance Act. Fourth one. Circulars and notification. And last one is, my dear friends, judicial pronouncements. अब जगह नहीं, adjust कर लो. Judicial what, sir? Pronouncements. Pronouncements means the rulings given by High Court or Supreme Court. The rulings given by High Court or Supreme Court. And if a ruling is given by High Court, that ruling is valid only in that particular state, binding only in that particular state. But ruling given by Supreme Court, binding across India. उसमें कोई doubt नहीं है. Clear, friends? Come on, guys. How many pillars of democracy are there? How many sources of income tax law are there? अरे आप मेरे क्वेश्चन सुनिए नहीं मैडम, सुनो आप मेरे क्वेश्चन ध्यान से. यार क्या बेटी आप,
मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर देयर, हाउ मेनी सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ आर देयर. यही है सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ. अपने को इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, ये 5 सोर्स है अपने पास. व्हाट इज नंबर 1? अब देख के बोल रहे यार, बोलो अभी क्या है. इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट, circulars and notification, judicial pronouncements. Who gives circulars and notification? CBDT. Annual finance act, how it will come into picture? First budget is presented by finance minister. Budget becomes finance bill when it is approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. And after the finance bill is signed by president, then it becomes finance act. अब मैं एक बात बोलूंगा सर, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो वापस बोलूंगा. सुनो ध्यान से. Whatever is there in budget, whatever is there in may not be there in finance bill. Whatever is there in budget may not be there in, क्यों? शायद लोकसभा ने कुछ अप्रूव नहीं किया, राज्यसभा ने कुछ पॉइंट अप्रूव नहीं किया. And whatever is there in finance bill may not be there in finance act, because president would have told this point is nonsense. Generally होता नहीं है, वो बंदा सिर्फ देखता है, साइन करता है बस, बंदा बंदी जो whatever it is. गेटिंग माई पॉइंट. बट बहुत बार ऐसा होता है बजट में फाइनेंस बिल में बहुत फर्क आता है, 4-5 पॉइंट उड़ जाते हैं, बिकॉज लोकसभा से मेंबर बोलते हैं कि ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए. उनको लगता है कि ये पॉइंट की वजह से उनका अटक जाएगा, तो बोलते हैं ये हटा दो हटा दो हटा दो, और सब हो गया खत्म. तो पता है ना, वो फिश मार्केट है वो, या कोई मार्केट जैसा चिल्लाते वहां पे, वेजिटेबल सब्जी मंडी में जैसा होता है वैसे चिल्लाते वहां पे. करेक्ट ना यार? एग्जैक्टली. How many sources of income tax law are there? What are those 5? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, then Annual Finance Act, Circulars and Notification, Judicial Pronouncements. Judicial pronouncements means rulings given by High Court or Supreme Court. Getting clarity? Everybody, sir? Now one important point which I'll tell you, then we will start writing. That is, some income tax rates are given in the finance, some income tax rates are given in the income tax act itself. For example, there is one section called section 112 for long term capital gain, section 111A for short term capital gain, 115BB tax rate for betting, gambling, lottery, crossword puzzles. There is one more section called 115BBE. पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सब पढ़ेंगे. So like this there are some interesting, अरे मजा आएगा यार, मजाक नहीं कर रहा, बहुत मजा आएगा. मतलब मैं frankly let me tell you, सब फैकल्टी बोलेंगे मजा आएगा, बट मैं 100% गारंटी देता हूँ मजा तो बहुत आएगा टैक्स में, बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है सर. इनको फाइनल में भी आएगा, आर्टिकलशिप में आएगा, आप जैसे जैसे जाते रहेंगे आपके पीछे टैक्स आते ही रहेगा. वेर एवर यू गो टैक्स विल फॉलो. बहुत मजा आएगा सर. कम ऑन. ऐसा बहुत सारे सेक्शंस है. सो सम रेट्स आर गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ, बट देयर आर सम रेट्स व्हिच आर गिवन ओनली बाय फाइनेंस एक्ट. मतलब जो हर साल चेंज होते रहते थोड़ा 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 थोड़ा, बट जो एक्ट में ही है वो चेंज नहीं होता है. वो जब चेंज करना है एक्ट को अमेंड करना पड़ता है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स? सो स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. हाउ मेनी सोर्स आर देयर इन इनकम टैक्स? व्हाट इज द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या करते हैं? इंटरप्रेट द लॉज. Constitution, which schedule they gave? 3 list. 7 schedule. What is second list? First list. Income tax is which list? Union list. Income tax is what in nature? Higher the income? In income tax, do we follow Diwali to Diwali? What do we follow? Financial year starting from to 31st March. Are we clear with that? Everybody, sir? चलो नीचे लिखो. There are 5 sources. There are 5 sources for income tax law. There are 5 sources for income tax law. There are 5 sources for income tax law. लिखो नीचे. Number 1. इनकम टैक्स एक्ट. विच ईयर बेटा? दोस्तों 61 से पहले इनकम टैक्स था? हाँ था.
22, उससे पहले भी था 1860. वो सब एग्जाम में नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि था या नहीं. आप ये समझ के बैठेंगे 61 से पहले टैक्स है ही नहीं, वो नॉनसेंस है. वो हम सीए के बच्चे जो मन में आए वो नहीं बोल सकते. क्लियर है ना? इनकम टैक्स एक्ट 1961. सेकंड, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एक साल के बाद आई है. एक साल के बाद आने का भी लॉजिक है, बताता हूं मैं वो लॉजिक. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बताता हूं उसका लॉजिक क्या है. एक साल के बाद क्यों है उसका लॉजिक है, बताता हूं मैं. चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961. सेकंड, इनकम टैक्स रूल्स 1962. थर्ड वन, एनुअल फाइनेंस एक्ट. एनुअल फाइनेंस एक्ट ब्रैकेट में लिखो ना, वो छोटा सा कहानी. बजट 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 becomes finance bill budget becomes finance bill when it is approved by budget becomes finance bill when it is approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. When it's approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. Full stop. Such finance bill will become finance act. Such finance bill will become finance act after the assent of president. Such finance bill becomes finance act after the assent. Assent spelling ASS. ACC नहीं है, ACC accent हो जाता है वो. ASS ENT after the assent of the president. Done. चलो, क्या क्या हो गया? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, एनुअल फाइनेंस एक्ट. अभी सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यार बोलना भूल गया. सुनो 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 सुनो, उसके बाद आप लिखते हैं आगे. सर हम एग्जाम कब लिखने वाले? 2023 finance, 2023 year we are going to write the exam. Correct or not? Friends, tell me. We are going to write the exam in 2023. Now please understand that when you are writing exam in 2023, Finance Act 23 will not apply to you. Which Finance Act will apply? 22 will apply. Finance Act 22 will apply for your exam, but Finance Act 23 will not apply for your exam. स्टूडेंट्स मतलब बहुत बार मैं ये देख के परेशान हो जाता हूँ सर. बच्चे सब पूछते रहते मेरे एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई होता. वो बोलता है 23, ये बोलता है 22, वो बोलता है 24, जो आज तक आया ही नहीं. जो मन में आया बोल रहे. एक ही चीज ध्यान में रखो सर दिमाग में, जिस साल आप एग्जाम लिख रहे उस साल का बजट आपको अप्लाई नहीं होता. यू गॉट माय पॉइंट? In which year you are writing exam, that year Finance Act will not apply to you. If you are writing exam in 23 Finance Act will not apply to you. What will apply to you? Finance Act 22. Are we clear with that, everybody? Speak out. Wonderful. Chalo. Get back. कहाँ तक हो गया? Fourth point. Circulars and notifications. Circulars and notification. Circulars and notification. Put a hyphen. Put a hyphen. Circulars and notification. Put a hyphen. Given by whom, sir? CBDT. CBDT. That is Central Board of Direct Taxes. That is Central Board of Direct Taxes. चलो बेटा last one क्या है दोस्त? Judicial pronouncements. Come on बच्चों लिखो ध्यान से. Judicial pronouncements. Put a hyphen. Rulings of High Court or what's there? Supreme Court. Rulings of High Court or Supreme Court. That's it. Come on guys. चलो रिलैक्स करो 2 मिनट. बोलो मुझे व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव. फटाफट कम ऑन. व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जुडिशियरी, प्रेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल.
Speak out. Constitution 7th schedule, how many lists they have given? 3 lists. Union list. Income tax in which list? Union list. Entry number 82. How many sources are there for income tax law? What are those 5? Income Tax Act 1961. Income Tax Rules 1962. Annual Finance Act. Circulars and notification. Judicial pronouncements. Circulars and notifications are given by CBDT. And how will Finance Act come into picture? Budget becomes Finance Bill. When approved by Lok Sabha and Rajya Sabha, then it is signed by President. Then it becomes Finance Act. Are we clear with this? Friends? Chalo. Chota break lete. Then we'll get back. 10 minutes. Done. Thank you.
चेक हेलो चेक यस ये बंद हो गया मैको ये बंद हो गया Yes, get back, guys. Come on. So, friends, we discussed about some interesting basics of income tax, where we discussed the sources of income tax law, and we also discussed what are the 5 pillars of democracy. So, what are the 2 types of taxes? Direct tax and indirect tax. Direct tax means what? Impact and incidence. याद रख लो दोस्तों, एग्जाम अगर क्वेश्चन आया तो लिखना मत कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब वर्ड्स यूज मत करो. प्लीज राइट दैट वर्ड. Impact and incidence is on same person. Impact and incidence is on different person. That is the meaning of this word called direct tax and indirect tax. Direct tax is what in nature? Progressive in nature. Indirect tax is what in nature? Regressive in nature. Regressive means irrespective of income, tax remains same. Progressive means higher the income, higher the tax, lower the income, lower the tax. Till this point, we are all clear, everybody? What are the 5 sources of income tax? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, then Annual Finance Act. After that, circulars and notification. Then what we had last one? Judicial pronouncement, ruling given by High Court and Supreme Court. And Annual Finance Act, how it will come into picture? First, there is something called budget. Budget becomes finance bill when approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. Then it is signed by President. It becomes a finance act. Are we clear? Everybody? Now listen to one interesting point. I told you that in income tax, we don't follow the concept of calendar year. We follow the concept of financial year. Correct, my dear friends? Speak out, everybody. Right. Now listen to one important point here, which I'll tell you very clearly. Please concentrate. Sir, when I write here, financial year 22-23. What does that mean? 1st April 22 to 31st March 23. Correct, my dear friends? And in income tax, we don't pay tax on monthly basis, but we submit our information to income tax on annual basis. However, there is a concept called advance payment of tax on quarterly basis and all, but technically, we are supposed to pay tax on yearly basis. Correct, my dear friends? Now, one important point which they told in the law, which is the golden rule of income tax, which is section 4, which is the chargeability section of income tax. Chargeability section of what, sir? Income tax. So basically, chargeability section says that when income is taxable in income tax. Which section, my dear friends? Section 4. Section 4. Listen to this point very clearly. What is that I am writing here in chargeability section? Chargeability section says, don't write anything, just relax and listen. Income earned by an assessee during the PY, that is previous year, is chargeable to tax in AY. AY stands for assessment year. बेटा अभी बोलो एक बार वो लाइन पढ़ो ना 2-3 बार please. What is that line? Income earned by an assessee. Come on friends, please. Important line. Income earned by an assessee. So सबसे पहले अपने को समझना चाहिए assessee है कौन, जो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाली है अभी. ठीक है? Income. बेटा income मतलब what is income? Income is a revenue or money earned during the course of operation. Now I'll ask you one question. Shiva Teja is taking class or giving service to a client. I make some money. Is it my income? Is it my income? Is it my income? Right. Next I have a question. I have got one building. I have got a
building which I purchased 5 years back for 1 crore. Now I sold for 3 crores. Did I make any profit? How much is my profit? 2 crores. Is it my income? Speak out. So income can be revenue in nature or income can be capital in nature. Revenue, capital, we know the difference, no? Revenue is which is the course of the activity. Capital is something which comes on sale of an asset. Sale of an asset, which we technically call as capital gains. Technically we call it as capital gains, which is the concept in income tax, which we will talk separately again. So income which is earned by an assessee. Who is assessee? We'll talk in detail. Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. First, let's complete what is this word previous year assessment year. Then we'll talk about who is assessee. Listen, when I write 22-23, what does that mean? 1st April 22 to 31st March 23. ये पता है ना सर अपने को? Speak out. For 22-23 year, assessment year is 23-24. For financial year 21-22, assessment year is 22-23. So basically, assessment year is the year in which we assess the income and submit the details to the income tax department by way of filing one document known as return of income. We will assess the income. We will submit the details to the income tax department by way of filing one document known as what, sir? Return of income. Return of income is a statement in which we submit details to the income tax saying that सर मेरे को इतना कैसे कमाई है साल में और मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ. वो डिटेल्स उनको बताना पड़ेगा ना सर? बोलो बेटा, वो ये काम कब करेंगे अपन? असेसमेंट ईयर में करेंगे वो काम. आर वी अग्रीइंग? सो प्रीवियस ईयर इज 22-23. व्हाट इज असेसमेंट ईयर? 23-24. प्रीवियस ईयर इज 21-22. असेसमेंट इज 22-23. प्रीवियस ईयर इज 16-17. असेसमेंट ईयर 17-18. प्रीवियस ईयर 18-19. Assessment is 19-20. So correct, sir? अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, which will write also. Listen carefully first. Then you tell me the answer. Here 22-23 is previous year. Correct? Sir, speak out here. When assessment year is 23-24, when assessment year is 22-23-24, when assessment year is 23-24, what is previous year? 22-23. Just close that, no? When assessment year is 23-24, what is previous year? 22-23. When previous year is 21-22, what is assessment year? 22-23. Do you agree to that? Speak out. I'll write one word here. Think properly and tell me. 22-23 will act as both PY and AY. 22-23 will act as both PY and AY. How? Listen carefully. 22-23 financial year is previous year for assessment year 23-24. 22-23 is assessment year for previous year 21-22. अरे बेटा समझ में आ रहा है आपको? अरे बोलो यार, सुनो ध्यान से सुनो. Again I'll repeat. Every financial year will act as both previous year and assessment year. And it is very important to know these words because henceforth we are going to talk about PY, AY, PY, AY, PY, AY. And income earned in previous year is chargeable to tax in assessment year. Income earned in previous year is chargeable to tax in assessment year. Getting clarity, everybody? दोस्तों बोले बेटा अभी बोलो. Every financial will act as both PY and AY. अब एग्जाम्पल लेते हैं एक. ये 22-23 सब छोड़ दो. Let's take 17-18. Now I'll ask you one question. Is 17-18 PY or AY? Both. 17-18 is PY for 18-19. 17-18 is PY for 18-19. 17-18 is AY for 16-17. Wonderful. I think you got the logic now. समझ में आ रहा है सर? और एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा फिर बराबर आंसर देना. Then we'll close this. Financial year 19-20 PY or AY? Both. PY for assessment year 20-21. AY for 18-19.
Getting clarity? So every financial year will act as both previous year and assessment year. Are we clear with this point, everybody? दोस्तों बोलो दोस्तों, सर टाइम पास नहीं करना क्या, समझ में आया नहीं आया दोस्तों, बोलो क्लियर बात है ये? तो हर साल एवरी फाइनेंशियल विल एक्ट एज बोथ पीवाई एंड एवाई. वो पिछले साल के लिए एवाई बनता है और आगे जाने वाले साल के लिए वो पीवाई बनता है. समझ में आ रहा है सर? और आपके एग्जाम के लिए, फॉर योर एग्जाम, प्रीवियस ईयर इज 22-23, असेसमेंट ईयर इज 23-24. लॉजिक है ना सर? क्यों लॉजिक है मैं बोलता हूं अभी. विच फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम? विच फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम? फाइनेंस एक्ट 22. अरे बोला ना मैं आपको, फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल है. फाइनेंस एक्ट 22 गिव्स रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23. When financial year PY is 22-23, AY is 23-24. So for your exam, PY is 22-23, AY is 23-24. Getting clarity, everybody? Speak out, my dear friends. सबको आई बात समझ में? ये दोस्तों बोलो. So does every financial act as both AY and PY? Everybody, what is PY full form? Assessment year, AY. अभी मैं मीनिंग बोलता हूं उसका डेफिनेशन, ये भी सुन लो, हम लिखेंगे बट सुन लो. प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड. Previous year is the year in which income is earned. Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. फिर से बोलूंगा सर, सुनो ध्यान से. Previous year is the year in which income is earned. Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. तो समझ में आए ना सर? जिस साल पैसे कमाए उसको क्या बोलते भाई? प्रीवियस ईयर. जिस साल हम रिटर्न फाइल करके टैक्स पे कर रहे, मैं अभी यहाँ पे हूं, यहाँ पे कुछ पैसा कमाया, तो क्या है प्रीवियस ईयर हो जाएगा इसका 22-23. असेसमेंट क्या होगा इसका 23-24. फ्रेंड्स आई बात समझ में? एवरीबडी गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट? एवरीबडी, डिड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पीवाई एंड एवाई? व्हाट इज पीवाई? ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड. व्हाट इज एवाई? ईयर इन विच previous year income is chargeable to tax. Clear everyone? Now one point, you listen carefully, then we will write this concept. Sir, when I write section 4 bracket 1, क्या मतलब है इसका? section 4 bracket 2, section 4 bracket 3, or let's say for example 23 subsection, sorry 23-1, 23-2, 23-3, and यहाँ पे मैंने लिखा 10-1, 10-2, 10-3. अभी मुझे बोलो दोस्तों, how do you read this 23-1? section 23 subsection 1. मैं बोल दिया आंसर ऑलरेडी बीच में, ठीक है? 23 subsection 1. ये 10-1 कैसा बोलेंगे? राइट. नेक्स्ट मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगा. सेक्शन 2 गलत है. ये भी गलत बोले आप, ये भी गलत बोले आप, ये सही था. आई टेल यू व्हाट, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेक्शन, सबसेक्शन, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, and there is something called proviso. Proviso is something like an exception. Proviso is something like an exception. There is something called explanation. Listen carefully, listen. There is something called, पहले क्या होता है सर? There is something called subsection. Subsection में कभी कभी होता है clause. Example सर, एक section है 56-10, which talks about taxability of gift. गिफ्ट को कैसे हम टैक्स करते हैं? फॉर एग्जाम्पल चाचा जी ने गिफ्ट किया 10 लाख, टैक्स होता नहीं होता है? इनकम टैक्स पे करना नहीं करना है? बोलो यार, करना है? इनकम टैक्स बोलता नहीं, जरूरत नहीं है बेटा, एंजॉय करो, चाचा जी आपका रिलेटिव बनते हैं. कोई दोस्त ने गिफ्ट किया, वो टैक्सेबल है. इनकम टैक्स दे टोल्ड गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट. हुज रिलेटिव विल टॉक इन डिटेल. उसका एक बड़ा डेफिनेशन है, समझना चाहिए. उसके बाद जो बंदा घर पे आता है चेक कर लो पहले, वो रिलेटिव है नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से, फिर बोलना भैया तो रिलेटिव है नहीं, निकल वैसे मस्ट. जोक से पार्ट समझ में आ रहा है सर? या सो दिस 56 सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10.
x नहीं हो 10 है सर क्लियर माय डिफरेंस एवरीबॉडी सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज कभी कभी होता है सब क्लॉज देन दे विल आल्सो ऐड वन प्रोविजो सब प्रोविजो होता है एक्सेप्शंस exception means which is against the basic rule which is against the basic rule for example let's say we decide that every Sunday is holiday but sometimes maybe some week normal working day we got a holiday so Sunday all faculties are taking class that's like an proviso that's like an exception exception is against the basic rule getting clarity speak out और एक्ट में लास्ट एक चीज होता है सर वो है एक्सप्लेनेशन वो है क्या सर दैट इज समथिंग लाइक ए क्लैरिफिकेशन इसका मीनिंग ये है इसका मीनिंग ये है एक्सप्लेनेशन देते वहां पे ठीक है ना सर स्पीक आउट फ्रेंड्स और कभी कभी ऐसा होता है सेक्शन उसके साथ होता है सीधा सिर्फ क्लॉज एग्जाम्पल गोइंग बैक टू माई पॉइंट इन फर्स्ट केस it is section 23 subsection 1 23 subsection 2 23 subsection 3 clear friends but in second case it is not 2 subsection 7 it is 2 clause 7 difference क्या है मैं बोलता हूं सर आपको सुनो ध्यान से when I write 2 8 this is 2 clause 8 the reason for that is this 7 concept is different 8 concept is different ये दोनों का कोई लिंक नहीं है ये दोनों का कोई लिंक है नहीं but in this subsection 1 and 2 are related to each other 1 and 3 are related to each other these all subsections are a part of main section are a part of that is the reason why in definitions section 2 of any act deals with definition ये पता है ना आपको तो और ये तो पता होगा ना आपको any act section 2 deals with what definition जब आपको पढ़ते 2 1 2 2 2 3 it is not 2 subsection 1 2 subsection 2 it is 2 clause 1 2 clause 7 2 clause 8 बिकॉज 7 का 8 का कोई लिंक नहीं है वो अलग है ये अलग है फर्क समझ में आ रहा है सर बट व्हेन वी से सबसेक्शन 23 subsection 1 23 subsection 2 I'll give a small example 23 1 deals with computation in case of let out property 23 2 deals with computation in case of self occupied property बट दोनों प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं सर दोनों का क्या है कनेक्शन है रिलेशन है बट 2728 का कोई रिलेशन है क्या अरे बोलो यार स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स एवरीबॉडी चलो अभी लिखते हैं ये पॉइंट फिर अपन आगे जाते हैं इन इनकम टैक्स एक्ट in income tax act come on there are various chapters in income tax act there are various chapters income tax act there are various chapters and chapters are further divided into and chapters are further divided into and chapters are further divided into income tax act contain various chapters and chapters are further divided into various sections chapters are further divided into various sections clear my dear friends next point next point some sections may contain some section may contain subsection some sections may contain subsection comma clause some sections may contain subsection comma clause comma subclause some sections may contain subsection comma clause comma subclause comma proviso 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 and also explanation and also what my dear friends explanation next point some sections
like definitions, some sections like definitions, some sections like definition contain only clauses, contain only what sir, clauses. Yeah, write one note, write one note, note करके underline करके लिखना बेटा. Note, all subsections in a section, all subsections in a section, all subsections in a section, all what my dear friends, subsections in a section are interrelated. Do you agree to that? All subsections in a section are interrelated, are interrelated, whereas there is no relation, whereas there is no relation, whereas there is no relation in case of clauses, whereas there is no relation in case of what my dear friends, clauses. What is clauses spelling? CLAUSES. Wonderful. So clear everybody? Our note में और एक point लिखना. Proviso, 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 proviso deals with, proviso deals with, proviso deals with exception, proviso deals with exception, proviso deals with exception to the basic provision, proviso deals with exception to the basic provision. Provision section meaning एक ही है. Clear no? So provision बोलना या exception section बोलना दोनों एक ही होता है. Clear no? So proviso contains what? Exception to the basic provision. Clear everybody? Next point. Explanation deals with, note में ही लिखते हैं. Explanation deals with meaning, explanation deals with meaning of any words, explanation deals with meaning of any words given in that section, explanation deals with meaning of any words given in that section. So getting clarity everybody? All of us please reply. Getting clarity on this point everybody? So friends, what are the sections? How does that flow? Section, subsection, clause, subclause, proviso, explanation. और जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन में सबसेक्शन हो, जरूरी नहीं है कि हर सबसेक्शन में क्लॉज हो, जरूरी नहीं है कि हर केस में प्रोविजो हो. You getting my point, no? That is why I didn't tell you all section. I told some sections. Clear? Some section directly contain what? Clauses. Example, definition sections. Those समझ में आ रहे हैं? Everybody, all of us. Now, what are the 5 sources of income tax? Income Tax Act 1961. Then Income Tax Rules 1962. Then Annual Finance Act. Then Circulars and Notification. Judicial. So basically, if you observe carefully, when I entered income tax department, here we are able to see something, sir. Central Board of Direct Taxes. देखे अपन अभी नाम? क्या है मतलब उसका? CBDT. What do they give? Circulars and notifications. Any clarification we want, it is given by CBDT only. I clearly told you this point. Friends, समझ में आ रहा है? Everybody बोलो दोस्तों. So what is CBDT full form? Central Board of Direct Taxes. Sir, Government of India is very focused, concerned, structured about income tax for a simple fact and reason that in India there is a population close to more than 140 plus crore population. पता है आपको? और हर 10 साल में एक बार गवर्नमेंट सेंसस निकालता है, which was last done in 2011.
2021 they were supposed to do census but they have not done it because of COVID and other reasons and all. और गवर्नमेंट को ऐसा गट फीलिंग है कि एक बार अगर सेंसस करेंगे तो इंडिया विल क्रॉस चाइना. टेक्नोलॉजी नहीं, पॉपुलेशन. काम ही नहीं है लोगों को यार. ठीक है, छोड़ो जो भी है. द पॉइंट इज वेरी क्लियर. I mean, at least this generation is sensible where people have 1 kid, 2 kids and all. Earlier तो people used to cricket teams. अरे ऐसे ही था यार. अभी मैं क्या बोलूं. अभी my grandfather has got 6 brothers, 2 sisters. ऐसे ही है. और सबसे छोटा जो मेरे नाना जी लगते, उनका बेटा मेरे से छोटा है और मेरे को होता है ताऊ जी. पर है इतना गिड्डा सब. क्या बोलो अभी, समझ गए ना मेरी बात. चलो, नाउ इन इनकम टैक्स माय डियर फ्रेंड्स देयर आर 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स व्हाट यू हैव टू नो. नंबर 1, फर्स्ट आपको वेबसाइट दिख रहा है सर यहाँ पे incometax.gov.in. सर कोई भी बंदा रिटर्न फाइल करना है ना उसको, इनकम टैक्स रिटर्न, ही विल यूज दिस वेबसाइट कॉल्ड incometax.gov.in. जीएसटी में है gst.gov.in, बट इनकम टैक्स में है incometax.gov.in, which is the income tax portal where all the activities related to income tax happens here only. Clear friends? We are going to learn this practically when we go to the chapter called income tax returns. They will understand return में क्या fill करते हैं हम. सर आपको समझना भी जरूरी है ना कि हम ये बोल रहे तब से कि जितना इनकम हम कमाए गवर्नमेंट को बताएंगे. कैसे बताएंगे? व्हाट्सएप करेंगे क्या? और फिर उनको बोलेंगे ब्लू टिक आ गया, तुमने देख लिया, तुम मेरा काम हो गया. ऐसा थोड़ी ना होता है. या इंस्टा पे टैग करके बोलेंगे हैशटैग इनकम टैक्स. ऐसा तो होता रहना यार. आई मीन सब चीज का कोई सिस्टम पैटर्न होता है ना. तो इन द सेम वे टू सबमिट डिटेल्स टू द इनकम टैक्स देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न. अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्म होता है एंड वी हैव दैट इन आवर सिलेबस व्हिच आई विल टीच यू प्रैक्टिकली आल्सो. क्लियर फ्रेंड्स? एवरीबॉडी? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. आप सबके पास एक नंबर है WRO, SRO, whatever it is. People have CRO, some of them have ERO. क्या है वो? रजिस्ट्रेशन नंबर. करेक्ट? श्वेता के पास भी एक नंबर है, मेरे पास भी एक नंबर है, मेंबरशिप नंबर. Number is given, no? Why numbers are given? Identification becomes easy. In school we all had roll numbers. Correct, my dear friends? If I call CN student and tell hello, this is Shiva Teja here, they'll tell hello, who are you? Correct, no, my dear friends? I mean, in Chennai office I call, everybody will recognize. But if I call Pune office and tell I'm Shiva Teja, they may not recognize me. But if I call and tell hello, this is 226729, they'll tell yes sir, please tell me. Membership number का एक value है ना sir? अरे yes sir, no sir. In the same way, for every income tax assessee, there is a number which is given. That number is called PAN. और क्या यार आपको पता है ये चीज यार? सब बच्चे सोच रहे अच्छा वही है क्या? पता है सर हमको. किसके पास पैन है यहाँ पे? अरे यार बहुत लोगों के पास पैन है. कौन कौन रिटर्न फाइल कर रहे हैं यहाँ पे? कोई नहीं सर. पैन लिए, पापा ने बोला पैन लेने के लिए, हमने कुछ फॉर्म साइन कर दिया. और कोई बंदा बोल रहा है सर इनकम ही नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ फाइल करेंगे? ठीक है, व्हाटएवर रीजन इट इज, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट पैन. पैन का फुल फॉर्म क्या है बेटा? पर्सनल. क्या दोस्त? व्हाट इज पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर. एग्जैक्टली, परमानेंट अकाउंट नंबर. हाउ मेनी डिजिट्स? 12. आपका पैन कार्ड देखूंगा मैं, उसमें अगर 12 नहीं है ना बेटा देख ले फिर. पैन इज ए 10 digit alphanumeric code. 10 digit what sir? Alphanumeric code. So basically if anyone has to do something in income tax, he should have the basic thing called PAN. So for example, if I want to register in income tax portal or log in to the portal, मुझे जब log in करना है सबसे पहले यहाँ पे पूछता है PAN. That PAN is only my user ID. Without my PAN I can't log in. आप बोलेंगे सर मेरा एक बार PAN एंटर करो ना, लॉगिन कैसा होगा? आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ना पहले पोर्टल में. Friends, correct or not? Now, going back to my dear friends, in income tax, there is one more very interesting website called incometaxindia.gov.in. My favorite website because bare act everything in income tax you will find there only. अभी आपको वहाँ पे जो आ रहा है वो आपको पढ़ना चाहिए. ये छोड़ो. See here about not about us. Let's go to act. ये मैडम को जानते ना हम? कौन है ये? फाइनेंस मिनिस्टर. ये भाई साहब को जानते हैं ना? ये तो हमारे खास है. So read that line. About 5.83 crore returns filed for assessment year 22-23. Saw that?
ए वाई देखा है आपने? आज के बाद अपने को पता है ए वाई पी वाई क्या है? बोलो। जब आपको दिख रहा है, वहां पे आया था ना अभी, कहा वापस आ जाए यार, ये है क्या? ये नहीं, ये, हाँ रुको अभी, रुक जाओ। इधर क्या लिखा है? ए वाई 22-23, दैट मीन्स व्हाट? असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22। जो जितने लोग ने अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक पैसे कमाए, वो 22-23 में रिटर्न फाइल करेंगे ना सर? स्पीक आउट सर। रिटर्न फॉर इनकम टैक्स को बताएंगे भैया हमने इतना पैसे कमाए, इतना टैक्स पे कर रहे, चेक कर लेना। वैसा करके हम रिटर्न फाइल करते। कैसा फाइल करते, क्या करते, वो सब बाद में देखते। सर फर्स्ट डे ना, समझेंगे, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, कोई टेंशन नहीं है। सर गेटिंग क्लैरिटी? अब मैं आपको 2 मिनट पहले बताया था इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ प्लस से रिटर्न कितने लोग फाइल कर रहे? सच्ची बोल रहा हूँ सर, इंडिया में 10 करोड़ के ऊपर रिटर्न भी फाइल नहीं हो रहे। Hardly about 6 to 7 crore people are filing return. We are talking about 140 plus crore population, and returns are filed only by 6 to 7 crore people. So government is very focused on income tax. जितना हो सकते उतने लोगों को इनकम टैक्स में लेके आ जाओ। और मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ ना, बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सबको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, पर बहुत सारे लोग पे करते नहीं। समझ में आ रहा है सर? Beat from starting at tiffin center point or a juice point or any point, because income tax has got a limit. We have got some basic exemption limit called 2,50,000. जिनका भी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है उनको टैक्स भरना ही पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा, क्या भरना पड़ेगा, वो सब हम कल बात करते। रेट ऑफ इनकम टैक्स विल टॉक टुमारो, दैट आई विल नॉट टच टुडे। फ्रेंड्स समझ में आ रहे? दैट्स व्हाई आई टोल्ड टुमारो। हाँ कैलकुलेटर्स, परफेक्ट। अभी देखो सर, लेट मी ओपन वन इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पे एक्ट दिख रहा है सर, सर दिख रहा है आपको? एक्ट, एक्ट के बाजू क्या दिख रहा है? रूल्स के बाजू क्या दिख रहा है? उसके बाजू क्या दिख रहा है? उसके बाजू क्या दिख रहा है? बजट्स। क्लियर? नाउ लेट मी ओपन हियर एक्ट। जब मैं एक्ट क्लियर किया, हमको कौन सा एक्ट देखना है? इनकम टैक्स एक्ट। सर व्हाई आई एम शोइंग दिस, यू नो, बहुत बार कोई स्टूडेंट को कभी कुछ सेक्शन का डाउट आता है ना, वो सीधा गूगल में टाइप करता है सेक्शन 4, सेक्शन 6। नॉनसेंस है वो। गूगल में सब लोग अपना फीलिंग्स इमोशंस बताते, बट व्हाट वी वांट इज नॉट फीलिंग्स एंड इमोशन, वी वांट सेक्शन एंड सबसेक्शन। याद रख लो ये चीज हमेशा। वी डोंट वांट फीलिंग्स एंड इमोशंस, वी वांट सेक्शंस एंड सबसेक्शन। सो गूगल का बिलीव मत करो यार, गूगल इज ओनली अ प्लेटफॉर्म वेयर सबका अलग अलग लोग अलग अलग चीज लिख दिए, वो पूरा एक चीज लेके आते हैं गूगल। बस गूगल का दिमाग थोड़ी है यार, इट्स जस्ट टेक्नोलॉजी वेयर दे ब्रिंग ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस, दैट्स इट। गूगल में टाइप मत करो, कुछ सेक्शन देखना है तो यहाँ पे ही देखना है अपने को। सर क्लियर? दोस्तों बोलो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेक्शन 4, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। लेट मी क्लिक दिस। अभी देखो ऐसा लिखता है यहाँ पे, इफ यू सी देयर इज समथिंग कॉल्ड 4.1, 4.2। व्हाट इज 4.1? 4 सबसेक्शन 1, 4 सबसेक्शन 2। सर गेटिंग क्लैरिटी? इसमें तो सेक्शन सबसेक्शन ही है, बट आई विल शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग नाउ, वेट। अब ये देखो, लेट मी ओपन सेक्शन 6, सेकंड चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न दिस सेक्शन 6। नाउ सी हियर, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? 6.1, दैट मींस व्हाट? 6 सबसेक्शन 1, क्लॉज ए बी सी। उसके नीचे क्या दिया बेटा? एक्सप्लेनेशन। सर दिख रहा है? फिर देखो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, 1A के नीचे क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन। अभी ये देखो बेटा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, उसके नीचे 1 and 2, उसका एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज A B C D, like this act flows, explanation is there. You understood? सर जब टाइम आएगा एक एक सेक्शन पढ़ते अपन, अभी नहीं। Now I opened only to tell you that this is how the act looks. There is section, subsection, clause, subclause, explanation. अब प्रोविजो, जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन हो, जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन में क्लॉज सब क्लॉज हो। सर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेक्शन 6 दिख रहा है ना सर? 6 में 6.2 है ना सर? 6 सबसेक्शन 2। सर 6.2 दिख रहा है यहाँ पे, उसके नीचे कोई क्लॉज है क्या? कोई सब क्लॉज है क्या? कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? 6.3 के एक्सप्लेनेशन है? सर समझ में आया मेरी बात आपको?
जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन हो, हर सेक्शन का सब क्लॉज हो. आर वी क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? ऑल ऑफ अस? दैट्स इट. नाउ लेट मी गेट बैक. सो as we were discussing with you, some sections contain subsection, clause, subclause, proviso, explanation. What is a proviso? Exception to the basic rule. Clear everybody? And some sections contain directly the clauses. Example? Definition sections. Clear everybody? Now we are going back to chargeability section. What we were talking. सर अभी आपको PY AY समझ में आया ना सर? यार बोलो यार. PY AY समझ में आया? So every financial will act as both PY and AY. Now let me tell you, my dear friends, this word PY is defined in the Act in section 234 read with section 3. And this is not section 2 subsection 34, it is section 2 clause 34. In definition section there is no subsection. Clear friends? आपको ये चीज समझना है, हर कॉन्सेप्ट का हमेशा एक ही सेक्शन होता है, हर कॉन्सेप्ट का एक सेक्शन होता है, पर यहाँ पे दो सेक्शन इसलिए है बिकॉज सेक्शन 234 says previous year means previous year as defined in section 3. 234 ने बोल दिया भैया आप प्लीज जाके सेक्शन 3 में देख लो. सेक्शन 3 ने बोल दिया previous year is the year in which income is earned. Clear friends? And this word assessment year is defined by 2.9, which says assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. Getting clarity friends? Everybody sir? दोस्तों बोलो. Put side heading section 4. Title लिखना chargeability section. Section 4 chargeability section. Section 4, what sir? Chargeability section, right below. Income earned by an assessee. 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 Assessee spelling is what sir? ASS ESS double E. Correct no? Income earned by an assessee in the previous year. Income earned by an assessee in the previous year is chargeable to tax in what sir? Assessment year. So clear? Below right. As per section 234 and section 3 देख सकते हैं आप वहां पे. As per section 234 and section 3, comma, previous year means the year means the year in which income is earned. So are we clear? Everybody? Which section defines previous year? Come on. Section 234 and section 3. Come on beta, wapas. Section 234 and section 3 defines what is previous year. Previous year means what? Year in which income is earned. What is which section is chargeability section? Section 4. What it says? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in. Right, next. As per section 2.9,
as per section 2(9), comma, assessment year, as per section 2(9), comma, assessment year is the year in which assessment year is the year in which previous year income is assessment year is the year in which previous year income is assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. Clear? Write one note. Every financial year will act as both PY and AY. Every financial year will act as both PY as well as AY. What is PY? Previous year. AY? Exactly. So getting clarity on this point, everybody? Friends, please बोलो बेटा. पक्का clear with this point? एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा सर अभी भी जो अपने को आंसर करना बाकी है. क्या लिखे हम सेक्शन 4? Chargeability section. Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in. Now some important concept is pending and which is left out. What is that? Listen carefully, sir. There is somebody called person. Who is a person? Who is a person? That's important because ultimately person only will pay tax. This word person is defined by section 231. Section 231, which clearly says person includes. ये बहुत डेंजर वर्ड है सर, सबसे बड़ा डेंजर वर्ड है ये, बिकॉज इसका बहुत फर्क पड़ता है सर. डेफिनेशन समझने का 3 तरीका होता है सर. वन टाइप ऑफ डेफिनेशन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, सेकेंड टाइप ऑफ डेफिनेशन इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, तीसरा तरह का डेफिनेशन होता है एग्जैक्ट डेफिनेशन. एग्जैक्ट डेफिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर वन पर्सन मिस्टर रमेश. मैं रमेश से पूछ रहा हूँ बेटा तेरे पास कितने गर्लफ्रेंड है? रमेश बोल रहा है माई गर्लफ्रेंड मीन्स 1 2 3. इसका मतलब क्या है? उसके पास सिर्फ 3 गर्लफ्रेंड है और कोई है नहीं. समझ गए आप? बट मैंने आस्क हिम कितने गर्लफ्रेंड है, रमेश बोल रहा है माई गर्लफ्रेंड इंक्लूड्स 1 2 3. क्या मतलब है इसका? 1 2 3 तो है ही, इसके अलावा और कोई है जो अभी बोल रहा नहीं वो अपने को. समझ गए सर? और लास्ट वाला तो हॉरिबल है. आई एम आस्किंग हिम आपके तेरे पास कितने गर्लफ्रेंड है? ही इज टेलिंग माई गर्लफ्रेंड एक्सक्लूड्स 1 2 3 4 5. इसका मतलब क्या है दोस्त? ये 5 छोड़ के बाकी सब दुनिया पूरा उसके गर्लफ्रेंड ही है. समझ में आ रहा है? दिस व्हाट डेफिनेशन सर? इंक्लूसिव. And in income tax, majority times you will find inclusive definition only. The reason for that is because whenever they want to add something, they can add. It becomes easy for them. Clear? And person includes individual. Individual मतलब हम लोग individuals. Second one, HUF. सुने ये नाम? क्या है फुल फॉर्म इसका? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सुने ना, आपके सिलेबस में था ना फाउंडेशन में? एग्जैक्टली. इंडिविजुअल, HUF, कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स, LLP. सुने LLP? बेटा LLP क्या होता है? फर्म में LLP में फर्क क्या है? फर्म में लायबिलिटीज. हाँ, फाउंडेशन तक ठीक है वो, आगे जाके ये लैंग्वेज मत बोलो, हो गया वो जमाना. अभी बोलो liability for partnership firm is joint and several, but in case of LLP it is limited to the extent of their capital. ये अनलिमिटेड ऐसा मत बोलो, टॉक टाइम नहीं है अनलिमिटेड बोलने के लिए. हो गया वो जमाना, फाउंडेशन खत्म हो गया, हम आगे इंटर में अभी. ठीक है ना यार? liability of partnership firm is what? joint and several, but LLP limited to the extent of their capital. कंपनी का भी सेम कहानी है.
करेक्ट ना? बोलो, इंडिविजुअल आ गया, एचयूएफ आ गया, फर्म आ गया, एलएलपी आया और कंपनी आया, और कौन हो सकते हैं? ओपीसी इज कवर्ड इन कंपनी ओनली. There is somebody called AOP, which stands for Association of Person. For example, एक इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, तीनों मिलके बिजनेस कर रहे, तो तीनों को क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्संस. गेटिंग क्लैरिटी? तीन बंदे मिलके बिजनेस कर रहे, उसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. फर्क समझ में आया ना सर? इन BOI ऑल ऑफ देम आर इंडिविजुअल्स, but in AOP it is individual, company, firm or anybody, all persons together coming and doing business. करेक्ट है ना सर? सर आप फर्क समझ में आया सर? सर सुनो ध्यान से सर. दो लोग है, शिव तेजा, रवि तेजा, दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. हमने ना पार्टनरशिप फर्म बनाया, हमने ना कंपनी बनाया, हमने ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बट हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. हम दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. गवर्नमेंट को बोलने के लिए कुछ नाम तो होना चाहिए ना. तो वो बोल रहे भैया अगर तू पार्टनरशिप फर्म बनाया तुमको हम फर्म बोलेंगे, अगर तू एलएलपी बनाया एलएलपी एक्ट के हिसाब से हम आपको एलएलपी बोलेंगे, तुमने कंपनी बनाया तो कंपनी बोलेंगे, तो कुछ बना ही नहीं, तभी हम तेरे को पकड़ेंगे और तेरे को नाम लगाएंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. तू बोल रहा है हम इंडिविजुअल नहीं है, वो तो कंपनी है, मैं इंडिविजुअल हूँ. अच्छा ऐसा बेटा, तो तुम दोनों मिलके हो गए एसोसिएशन ऑफ पर्संस. नाटक नहीं करने का, टैक्स तो पे करने का. समझ में आया सर? चलो, हु इज कवर्ड इन पर्सन? और एक बोलूंगा, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, AOP, BOI. अंडरस्टूड? लास्ट एक क्वेश्चन पूछता हूं सर. Isn't this interesting? You all are doing BCom from some university? Speak out. Some universities are doing BCom. If I ask you, show me the university, can you show me? You will take me to that physical place and show me the buildings and university. But is there any physical shape and form for a university? Speak out here. If I ask you, show me charitable trust, can you show me the trust? Papers you can show, but can you show me the trust as such? That is called AJP, artificial judicial person. Perfect. They also call judicial, some of them call juridical person. Meaning वही होता है, juridical मतलब judicial meaning person. Getting clarity? Let me give a classic example. Since I come from that place, I'll give a small example. There is something called Tirupati temple. बहुत लोग गए होंगे. I mean, whoever would have gone, Tirupati temple is controlled by one trust called TTD. That is called Tirumala Tirupati Devasthanam. That's one trust. That is one trust. But that is also paying tax. That is called as AJP, artificial judicial person. Is expert under AJP? Expert comes under company. It is expert professional academy private limited. Will come under company. Shiva Teja, body of individual. Accused by कोई नहीं है यार यहाँ पे. Shiva Teja is what? Individual. मैं और मेरा दोस्त, let's say for example मैं और प्रशांत सर दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, और हम दोनों ने ना पार्टनरशिप फर्म बनाया, ना कंपनी बनाया, ना LLP बनाया. मुझे प्रशांत सर को मिलकर क्या बोलेंगे आप? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. प्रशांत सर का समझो, प्रशांत सर का खुद का एक एकेडमी है जो कंपनी है, वो कंपनी और शिव तेजा साथ में बिजनेस कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. प्रशांत सर और मैं दोनों मिलकर एक LLP बनाए, LLP, दोनों मिलकर फर्म बनाए, फर्म, दोनों मिलकर कंपनी बनाए, दोनों मिलकर एक ट्रस्ट बनाए. ट्रस्ट विल बी कॉल्ड एज AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. गेटिंग क्लैरिटी? और लास्ट वाला तो आपको पता ही है, फिर भी मैं लिख लूंगा, लोकल अथॉरिटी. OER, PMC, BMC, हैदराबाद वी हैव गॉट HMC. क्या है वो? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी. So getting clarity? These are all covered in definition of what? Definition of person. सर क्लियर है? सर स्पीक आउट. आज के लिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट बोलूंगा सर, जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सुनो ध्यान से. 10 मिनट टाइम दो, विल कंप्लीट दैट कॉन्सेप्ट. लिसन वेरी क्लियरली. लेट मी क्लोज दैट. एवरी assessee, ये वर्ड पता है ना आपने, कुछ लिखे ना हम लोग. इनकम अर्न्ड बाय एन assessee ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर. सर लिखे नहीं लिखे हम लोग ये बात? दोस्तों, every assessee is a person.
but every person need not be an assessee. मैं जब पूछा था किस किस के पास पैन कार्ड है, बहुत सारे लोग हाथ उठाए, वो लोग सब पर्सन से, but let me tell you they are all not assessee. They are all not. Now big question is who is an? Who is an? Now listen very clearly. Please carefully listen. Who is an assessee? Assessee means any person liable to pay tax. What is 27? Assessee. 29. देख के बोलो यार, बोल दिया मैंने. Assessment year 231. Person 234. Previous year section 3. Previous year section 4. Chargeability section. एक और बार ट्राई करें. हाँ बोलो यार. 27. Assessee. देख के बोलो, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है ना, चलेगा, बट कल से तो खेलेंगे मस्त. कम ऑन. 27. 29. असेसमेंट ईयर. सर लॉजिक समझो यार, वही सीक्वेंस में जाता है, डेफिनेशन हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही जाता है. 27. 29. असेसमेंट ईयर. 231. पर्सन लिखे नहीं हम लोग, बट अभी पढ़े थे. 234. प्रीवियस ईयर सेक्शन 3. सेक्शन 4. चार्जेबिलिटी सेक्शन. How many pillars are there in democracy? How many sources are there for income tax law? How many types of tax are there? Article 265 says what? No tax should be levied or collected except by authority of law. Constitution 7th schedule, how many lists they gave? What is CBDT full form? Central Board of Direct Taxes. They give circulars and notification. How will Finance Act come into picture? Budget, Bill, Act. Budget will become bill when approved by Lok Sabha and Rajya Sabha. Signed by President. It becomes Act. Whatever is there in budget may not be there in bill. Whatever is there in bill may not be there in Act. कम possibility है, but possibility तो है ना. अब बोलो 27, 29, 231, 234, section 3, section 4. What is charitability section? Section 4. वो क्या है, क्या बोलता है? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in. हमको ऑलरेडी पता है प्रीवियस ईयर क्या है, हमको ऑलरेडी पता है असेसमेंट ईयर क्या है. हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ये खत्म हो गया तो सेक्शन 4 खत्म. क्लियर नो? खत्म करते हैं आज. चलो देखो, assessee means what? Any person liable to pay tax and includes, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है सर, सुनो ध्यान से. and includes, come on, क्या लिखे हम लोग? assessee means any person liable to pay tax. so वापस बोलो ना, assessee means any person liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up. What have been taken up, sir? Proceedings have been taken up. Notice दे दिया इनकम टैक्स ने, पकड़ा उसको बंदे को, इतने साल से टैक्स पे नहीं कर रहा है, बेच रहा है मस्त वड़ा पाव, इतने टाइम से टैक्स पे नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. मैं वड़ा पाव बोलने का कुछ रीजन है. रिसेंटली एक बंदे को पकड़े पुणे में, जो वड़ा पाव बेच रहा सालों से, रोज हजार वड़ा पाव बेचता है, फुल पैसे कमा रहे. इनकम टैक्स ऑफिसर एक बार आके उसको देख लिया, पकड़ लिया उसको, रातों रात इनकम टैक्स ऐड किए थे. डिटेल बाद में बोलता हूँ कल, ठीक है? देखो अभी, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम व्हाट हैव बीन टेकन अप, proceedings have been taken up for assessment of his income or loss or in respect of any other person or in respect of what, sir? Any other person. मैडम आप सुनो ना प्लीज, गाना चलते रहेंगे, उसका कोई हद नहीं है. सुन लो आप लोग पहले, यूट्यूब में लगाएंगे तो बहुत गाने आते हैं. देखो पहले, कम ऑन, व्हाट इज द पॉइंट हियर? एवरी, सर वो लाइन सुनो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है यार. देखो सब, एवरी पर्सन in respect of whom what is taken up, proceedings have been taken up. That means what? Some action is taken against him,
some notice has been given for assessment of his income or loss or in respect of any other person for whom he is accessible. एक एग्जाम्पल बोलता हूँ सर मेरा एक बेटा है, अभी यहाँ पे नहीं है but हैदराबाद में 5 साल का बेटा है, ठीक है, वो मेजर है माइनर है? 5 साल का तो माइनर. अगर वो इनकम कुछ कमाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है वी विल क्लब दैट इनकम. व्हाट विल डू? क्लब दैट इनकम इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हुज़एवर इनकम इज हायर. पापा का इनकम देखो, मम्मी का इनकम देखो, जिसका इनकम ज्यादा है आप टैक्स भरो आपके बेटे का इनकम का. समझ में आ रहा है सर? अभी ये लाइन पढ़ो आपको आंसर आ जाएगा. एवरी पर्सन शिवा तेजा in respect of whom proceedings are taken up for assessment of my income or my loss or in respect of any other person, my chotu, for whom Shiva Teja is accessible. Because for my chotu, I am only responsible. No sir. सर समझ में आ रहा है बात? स्पीक आउट. अभी पढ़ो बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट है. पूरा पढ़ते स्टार्टिंग से, कहानी खत्म नहीं हुआ अभी. बोलो स्टार्टिंग से. Assessee means any person liable to pay tax and includes what? And includes every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or loss, or in respect of whom, or in respect of any other person for whom he is responsible. Getting clarity? Second one is called deemed assessee. What is that assessee, sir? एग्जाम्पल एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट. फॉरेन का बंदा पकड़ना है अपने को, फॉरेन वाले को पकड़ नहीं सकते तो हम पकड़ेंगे इसको एजेंट को. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीम्ड एसएससी. डीम्ड मींस अज्यूम्ड. डीम्ड मींस, लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जांपल सर. फॉर एग्जांपल आपने आप घर पे बैठे आराम कर रहे थोड़ा, मम्मी को बोल दिया मम्मी मैं बेडरूम में जा रहा हूँ, रूम लॉक कर दूंगा, मैं फुल पढ़ाई करने वाला हूँ, शाम तक डोर नॉक नहीं करना, शाम तक कुछ पूछना नहीं, मैं अंदर फुल पढ़ाई करूंगा. आप आपका फोन ले लिए, अंदर चले गए. आप अंदर क्या कर रहे हैं सिर्फ आपको पता है, आपके फोन को पता है, बराबर ना यार? बट बाहर मम्मी क्या सोचेंगे? डीम्ड टू बी स्टडीइंग, अज्यूम टू बी स्टडीइंग. आज के बाद ये समझ गए डीम्ड का वर्ड का मतलब मीनिंग क्या है. क्लियर है ना सर? डीम्ड एसएससी. एग्जाम्पल एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट. एग्जाम्पल भी दे दिया आपको बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली कहाँ पे आता है. नॉन रेजिडेंट को पकड़ नहीं सकते हम तो किसको पकड़ेंगे? एजेंट को पकड़ेंगे ऑब्वियसली यार. करेक्ट नो? लास्ट एक वर्ड है सर, इससे कहानी खत्म. दैट इज कॉल्ड assessee in डिफॉल्ट. assessee in डिफॉल्ट. उसके ऊपर कुछ डिमांड नोटिस रेज किया है, बोले बेटा तेरे को इतना टैक्स पे करना है, पर वो पे नहीं कर रहा है. देन वी विल गिव हिम वन भारत रत्न टाइटल. क्या है वो टाइटल का नाम? assessee in default. Name is assessee in default. He is supposed to pay tax, he has not paid. For example, वड़ा पाव वाले को पकड़ लिए और उसको नोटिस दे दिए, भैया 10 लाख तेरे को टैक्स पे करना है, हम तेरे को 1 हफ्ता टाइम दे रहे, 1 हफ्ते के अंदर अगर तू पे नहीं किया देन वी विल चार्ज पेनाल्टी, वी विल चार्ज एवरीथिंग. उसके बाद अंदर पे बिठा देते. एक बार 1 हफ्ता क्रॉस हो गया उसके पास एक टाइटल आ जाएगा, assessee in default. assessee in, इतना बड़ा मीनिंग है सर assessee का. सब लोग इतना सिंपल से बोलते थे assessee means who is liable. उतना ही थोड़ी है क्या? अगर ऑफिसर ने कुछ एक्शन लिया, उसको पकड़ा, तभी भी वो assessee बनता है. डीम्ड assessee भी हो सकता है, assessee in default भी हो सकता है. बहुत बार एग्जाम में आया सर ये कॉन्सेप्ट. और बच्चे लिखते हैं एक ही लाइन, एवरी assessee इज ए पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन assessee. मीनिंग बोलो बोल तो कहानी बोल रहे हो. समझ में आ रहा है सर? आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? स्पीक आउट. चलो लेट्स प्रोसीड. पुट साइड हेडिंग पर्सन और लेट्स राइट assessee फर्स्ट. लेट्स टेक दिस फर्स्ट. पहले ये लिखो आप लोग, पहले आप लोग assessee का डेफिनेशन लिख लेना.
So which section defines SSC? 27. So 80 means any person liable to pay tax. Sir, अभी आप बोलो आपके पास पैन कार्ड है and generally I told you we have got some basic limit called 2,50,000. आप बोलो आप लोग पर्सन है क्या? आप लोग पर्सन है क्या? Yes. बट आप लोग एसएससी है क्या? इसलिए हमने वो लाइन लिखा है, हर एसएससी पर्सन होता है बट हर पर्सन जरूरी नहीं कि वो एसएससी होता है. और यस माय डियर. नहीं, अगर दो इंडिविजुअल दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं और वो दोनों ने पार्टनरशिप फर्म बना चुके ऑलरेडी उनके नाम पे, देन इट बिकम अ पार्टनरशिप फर्म. बीओआई का कॉन्सेप्ट तभी आता है अगर वो दो बंदे साथ में बिजनेस कर रहे हैं बट वो फर्म नहीं बनाए, कंपनी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाए, दे डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन वी कॉल देम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना देते जैसे कंपनी या फर्म तो उनको वही नाम से बुलाएंगे ना. See, in expert, all the faculties are individual, but individuals came together and created one company. Then we will no more carry that name of body of individual. We all together are representing company. सर क्लियर है सब लोग? लिख लिया ये बात? चलो नीचे लिखना दोस्तों, पर्सन का डेफिनेशन लिखते हैं हम. सेक्शन 231 ये भी लिख लेना दोस्त प्लीज. हो गया दोस्तों? एजेपी का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. एओपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्संस. बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल. जुडिशियल जुरिडिकल दोनों एक ही होता है. एग्जाम्पल क्या है उसका? यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट, वो सब उसमें आते हैं एजेपी में. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. सर क्लियर है? लास्ट नोट फॉर टुडे with which we'll complete. Write one notes.
every SSC is a person. करेक्ट ना? अपन पहले लिखे SSC means any person liable to pay. स्टार्टिंग में आ रहा है पर्सन. करेक्ट नो? लिखो बेटा. Every SSC is a person, but every SSC is a person, but every person need not be an SSC. Every SSC is a person. Every SSC is a person, but every person need not be an SSC. That's it. दोस्तों क्लियर है? समझ में आया सब कुछ? चलो, give me 5 minutes time, then we'll close the class. कुछ भी लिखने का नहीं है, रिलैक्स करो. चलो guys, बोलो अभी मुझे. What are the 5 pillars of democracy? Legislature, executive government, judiciary, press, controller and auditor general. Legislature frames the laws. Executive government implement the laws. Judiciary interpret the laws. Press echoes the public opinion. Controller and auditor general watchdog for public funds. Article 265 says what? No tax shall be levied or collected except by authority of law. Constitution, which schedule they gave? 3 list. 7th schedule. What are 3 list? Union list, state list, concurrent list. Union list matters, power is there exclusively with. State list matters. Concurrent list, both central and state government. Correct, my dear friends? Everybody please reply. All of us getting clarity. What are the 2 types of taxes we have? Direct tax and indirect tax. Direct tax is a tax where impact and incidence is on same person. Indirect tax is a tax where impact and incidence is on different person. Impact means who is liable. Incidence means who actually pays. Which one is progressive in nature? Direct tax is progressive in nature. Indirect tax regressive in nature. Sir, clear है? समझ में आया सबको? चलो बेटा, what is section 27? 29. Assessment 231. 234. Section 3. Section 4. सब समझना है सर, सब सेक्शन नंबर समझना है. एंड एंड ऑफ द क्लास लेट मी टेल यू, जब लास्ट डे आएगा ना सर, वो कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक पूरा सेक्शन नंबर फिल कर दूंगा और आप लोग पूरा आंसर्स भी देंगे, ये मेरा गारंटी है. और रात में कोई भी टाइम डिस्कस करिए, 100% सेक्शन नंबर आंसर्स आएगा ही आएगा. बिकॉज दैट कम्स विद प्रैक्टिस. बिकॉज आई बिलीव समथिंग अ लॉट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो परफेक्ट. डोंट वरी. फिर बोलेंगे सर सिर्फ आप उनको बोल रहे हैं. नहीं सर, सिंपल सी बात है सर, जितना हम प्रैक्टिस करें उतना ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएंगे. क्यूमुलेटिव रिविजन जब करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएंगे. ऐसा कुछ ग्रीक एंड लैटिन नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते. इतने सारे लोग से इतने सारे लोग किया है तो हम भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बट उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट कमिंग टू द क्लास, कंसिस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड. आई नो, मुझे पता है स्लाइटली डिफिकल्ट है, सुबह 8 बजे आना है, रात तक बैठना है, अलग अलग क्लास सुनना है, लंच करना है, तो सब अलग अलग काम है. आई अंडरस्टैंड दैट, बट वट एवर इट इज, वी हैव चूजन टू डू दिस, so we have to do it. Because there could be 2 cases. Some of them would have come to this by choice. Some of them would have come to this by chance. Whatever way you would have come, you have come, no. Complete it very quickly and finish off. I mean, I entered CA by chance only. मुझे हमेशा कहता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री दिमाग में जाता नहीं, तो करना ही नहीं है वो कोर्स. तो मैंने पूछा सबसे क्या करना है, तो सब बोले कॉमर्स. मैं पूछा क्या रहता है उसमें, मैथमेटिक्स. चलो जाओ करेंगे. जब मैं ज्वाइन किया इंटरमीडिएट में प्लस 11th 12th में, कोई बंदा बोला है कि सीए करना है, 16 घंटा पढ़ना है, 18 घंटा पढ़ना है. बोला 18 घंटा पढ़ना है 24 घंटे, 8 घंटे मेरे को सोने के लिए चाहिए, 1 घंटा वॉशरूम में बैठूंगा मैं, 2 घंटा रिलैक्स करना है. मतलब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ यार, 2 घंटा रिलैक्स करना है, बचा 11-12 घंटे. कैसा होता है 16-17 घंटे पढ़ने के लिए? तो बोला नहीं आप कोशिश करो, अपने आप आता है, हो जाता है. बोला ठीक है, 2 ही लेटर है, चालू करेंगे. वो समझ के आया मेरे से 2 लेटर सीए है करके. बट आने के बाद जब घुसने के बाद मालूम पड़ा है कि इसमें बहुत कुछ माहौल है जो बहुत कुछ करने का है. बट यही सोच लिया दिमाग में, बस करना है तो करना है, आ तो गया ना कैसे भी, खत्म करके जाएंगे. और मैं जब सीए ज्वाइन किया सब लोग शॉक हो गए, ये बंदा सीए करेगा क्या? उनके चेहरे पे जो रिएक्शन था वो चेंज करना था मुझे, उसके लिए मैं सीए खत्म किया. लिटरली फॉर दैट रीजन ओनली आई बिकेम सो मच सीरियस दैट आई हैव टू डू दिस. उनके चेहरे पे रिएक्शन चेंज करना ही करना है मुझे, उसके लिए मैं बहुत सीरियस लेके खत्म किया इसी कोर्स को. और जब रिजल्ट दिन आया ना सर, जब सीए पास हो गया, वो लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो रहता ना सर, टीयर्स कमिंग आउट ऑफ सैडनेस,
इज वेरी इजी. रोए तो रोना आता है बस, कुछ नहीं है. बट टीयर्स आउट ऑफ हैप्पीनेस इज वेरी प्रेशियस. वो आता नहीं जिंदगी में बहुत बार, रेयरली रेयरली आता है. एंड माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ व्हेन आई क्राइड आउट ऑफ हैप्पीनेस इज व्हेन आई पास सीए. नॉट व्हेन माई गर्लफ्रेंड टोल्ड ओके. तब नहीं हुआ उतना खुशी, बट तब तो थोड़ा खुशी हुआ, बट आंसू तो नहीं आए. बट जिस दिन सीए पास किया उस दिन तो इतना खुशी हुआ, मतलब लिटरल आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग. और उस दिन रिजल्ट जब आया वो लोग बोले 11 बजे रिजल्ट आएगा. 2 बजे तक रिजल्ट नहीं आया. ब्रेकफास्ट नहीं है, लंच नहीं है, खाना नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. लोगों का फोन आ रहा है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. अरे रुकना मेरे भाई, बोलूंगा ना रिजल्ट आते ही. बराबर ना यार. मेरे मम्मी पूजा रूम में बैठे हैं, पूजा कर रहे आया क्या रिजल्ट नहीं आया, आप कंटिन्यू करो पूजा, चलो चलने दो पूजा, बंद मत करो आप पूजा. मेरे पापा को बोला पापा आप रिजल्ट देखो, थोड़ा सेंटीमेंट लगता है, आप देखो फाउंडेशन इंटर आप ही देखे, पास हो गया हमें, फाइनल भी आप ही देखो. उन्होंने रिजल्ट एंटर किया, वो प्रोसेसिंग में था, सिस्टम एरर दिखा रहा है, रिजल्ट आ रहा नहीं, पॉपअप नहीं हो रहा है. पहले हार्ट बीट अप एंड डाउन, रिजल्ट का टेंशन है, लोगों का फोन आ रहा है, क्या करना है क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा है यार. पापा जब वापस एंटर किया ना यार, वहां पे 4 लेटर सिर्फ PASS, वो देखते ही बस लिटरली रोना आ गया बॉस. कुछ मार्क्स नहीं देखा मैं, कुछ भी नहीं देखा. लिटरली 1-2 घंटे के बाद देखा मेरा मार्क्स क्या है. मुझे वो सबसे लेना देना नहीं है, 4 लेटर दिख रहा है ना पास, क्या मार्क्स हो तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा रैंक है तो मतलब कुछ फर्क तो पड़ेगा लाइफ में. ठीक है रैंक आए या 200 मार्क है 300 मार्क है जो भी आए, पास तो हो गए ना यार. वो 4 लेटर दिख के मैं लिटरली ऐसा रोया, लिटरली आई फेल ऑन द फ्लोर एंड स्टार्टेड क्राइंग. और आप एपिसोड देखने लायक था. मेरे मम्मी बाहर आ गए, बोले बेटा इतना रो मत, कोई बात नहीं अगले बार लिख लेना बेटा. मैं बोला मम्मी पास हो गया, मम्मी भी रोना चालू. बहुत प्रेशियस है सर. देखो अभी सी इट्स 11 years दैट आई बिकेम ए सीए. 11 years बैक आई पास में सीए, और लास्ट 10 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ. कितना प्रेशियस मोमेंट है सर. वो मोमेंट एंजॉय करने के लिए ना सर मेहनत करना पड़ता है. आई नो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट फैक्ट दैट हम मेहनत नहीं कर रहे. मेहनत कर रहे और करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव चूजन टू डू इट, वी विल डू इट. एंड माई हम्बल suggestion and request to you guys is that don't miss any class unless you have a reason to miss it. I mean, when I give a holiday, take it, but you don't self-declare a holiday unless you have a strong reason. क्योंकि रोज आएंगे ना क्लास को, वो कनेक्ट मिलेगा. अगर 1-2 दिन बीच में मिस होता है तो कनेक्ट करने के थोड़ा मुश्किल हो जाता है. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, कुछ मिस मत करो एंड प्रेफरेबली हमेशा फेस टू फेस ही अटेंड करो. क्योंकि लाइफ में कभी कभी क्या होता है, वो डाइवर्शन कभी कभी हो सकता है. जब फेस टू फेस सुनने ना ऑटोमेटिकली बंदा ज़्यादा फोकस करते हैं. जो थिएटर में देखते हैं OTT में देखते हैं, फर्क होता है ना सर. यस और नो माय डियर फ्रेंड्स. थिएटर में क्या है, 3 घंटे बराबर बैठेंगे, बीच में ब्रेक लेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, सब करेंगे. इधर पॉपकॉर्न तो नहीं है बट क्लास तो बराबर मिलेगा, वो तो मेरी गारंटी है. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो डोंट मिस आउट. वी विल हैव ए ग्रेट एक्सपीरियंस and I assure and I promise you that you will have great learning, joyful experience with me. That is my assurance. Clear friends? Thank you so much. See you guys tomorrow. And last one time, what is section 27? SSC 29, 231%, 234, section 3, section 4. Exactly. और रोज सुबह क्लास चालू होने से पहले एक 5 मिनट रिवर्स कर लेना बस. 1 घंटा 2 घंटा जरूरत नहीं है, एक 5-10 मिनट ऐसा रिवर्स कर लेना, आ जाना, ताकि अपने को और बेटर हो जाएगा. यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. टेक केयर. सी यू टुमारो. हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट लर्निंग एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. ऑल द बेस्ट गाइस. अगेन ऑल द बेस्ट, बिकॉज आज से आपका सीए इंटर का जर्नी चालू है. एंड आई एम ग्लैड एंड हैप्पी टू बी द फर्स्ट फैकल्टी, फर्स्ट डे ऑफ योर सीए इंटर स्टार्टेड विथ मी. सो आई विश होल हार्टेड सक्सेस टू यू गाइज. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पूरा का पूरा मेहनत डालो दोस्तों. स्टार्टिंग से ही मेहनत डालो, ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा. और मस्ती सब टाइम पास तो मैं करते रहेंगे क्लास के साथ साथ, बट क्लास के साथ तो टाइम पास मत करो. और किधर भी जा रहे हैं आप, कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, मैं सिर्फ टैक्स का नहीं, हर सब्जेक्ट, कोई भी जगह पे जा रहे हैं आप लोग, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना. सब्जेक्ट इज फर्स्ट, time pass is next. Time pass cannot be first, subject cannot be next. It has to be subject first, time pass next. क्योंकि अपने पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है और अपने को मेहनत करना ही है. सी इंटर पे मेहनत नहीं करोगे कब करोगे? और मुझे ये मत बोलो सर हम लोग सिर्फ 19 साल का है, 20 साल का है, ऐसा नहीं होता है. उम्र से लेना देना कुछ नहीं है. हम भी करें 20 साल के उम्र पे सी है. आई नो मेहनत लगता है, मैं मना थोड़ी ना करा, मैं बोला ही नहीं कि मेहनत नहीं लगता है. मेहनत लगता है बट करना पड़ता है. इट्स डिफिकल्ट. 2-3 दिन लगता है थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए. सुबह आ रहे, हॉस्टल लगा रहे, खाना ढूंढ रहे, नीचे जाते, ब्रेक मिलता है, अचानक जाते, सब अलग अलग टेंशन है. आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट मेहनत तो चलते रहना.
उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ठीक है दोस्तों, क्लियर, डन. आपको बहुत जल्दी मॉड्यूल में मिल जाएगा. आई विल कीप ऑन रिवाइजिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लास में पार्टिसिपेट करो. क्वेश्चन पूछे तो आंसर बोलो, सेक्शन नंबर पूछे तो आंसर बोलो, ताकि आपको आपको मजा आएगा. वो फीलिंग आना चाहिए सर, दैट किक शुड कम इन लाइफ. क्लियर, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय. हाँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक ही चीज़ सर, मुझे पता है आप लोगों को शाम तक क्लास है. मैं ना एक्चुअली मैं दोपहर तक एक्सपर्ट के ऑफिस में ही हूँ. अगर आपको लंच टाइम में आके मुझे मिलना है, कुछ क्वेरीज पूछना है, कभी भी बिंदास आके पूछ सकते हैं. मतलब मुझे यहाँ पे पुणे आने का एक ही रीज़न है, क्लास पढ़ाने का. इधर कुछ टाइम पास करना नहीं है मुझे, मतलब कर लूंगा मैं अपने एंजॉयमेंट में करूंगा. यू गाइस थिंक दैट ये बहुत स्टूडियस बंदा है, सीरियस बंदा है, ऐसा कुछ नहीं. मैं जब रोड पे नाचूंगा ना तो पागल हो जाएंगे आप लोग भी. मतलब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं. सी बिकॉज आई हैव ए क्लियर प्रिंसिपल इन माई लाइफ, वेन यूर एंजॉइंग, एंजॉय लेके मैड फेलो. लोग तुमको पागल समझने दो, बट ऐसे एंजॉय करो कि आप खुद के लिए जी रहे. बट जब पढ़ाई कर रहे तो ये समझो कि कोई कुछ भी समझ रहा, आपको पढ़ाई करना है तो करना है. आप थिएटर में जाके मूवी देख रहे हैं, मस्त एकदम मूवी देख रहे हैं, थिएटर के सामने सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स क्लास में क्या चल रहा है, तो गया है क्यों पिक्चर? फिर तो जाना एंजॉय कर पिक्चर में. जब क्लास में आके बैठा है तो फिर कुछ और सोच रहा है, क्या मतलब हो गया? आई मीन आई हैव ए क्लियर क्लैरिटी इन माई लाइफ दैट ये करना है तो यही करना है, ये करना है तो यही करना है. तो फॉर दैट रीजन इन टिल आफ्टरनून टाइम आई बी इन द ऑक्सफोर्ड ऑफिस ओनली. आपको कभी भी क्लास में कुछ क्वेरी आए, डाउट है, बाद में आए, कभी भी आए तो बिंदास आके पूछ लेना. ठीक है ना सर? थैंक यू.
हेलो हेलो हेलो